जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में और एक बार सब पवित्र लोगों में सेवन देता हूँ। लवकरात लवकर येणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। ये साल बहुत तेजी से गया, आणि हे वर्ष खूप लवकर निघून गेलं अभी थोड़ा दिन बाकी रह गया, आणि थोडेसे दिवस आता उरलेले आहेत वो भी निकल जाएगा। आणि ते पण आता संपतील। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वेळ कोणाची वाट पाहत नाही हमें इंतजार करना पड़ता है। आणि आपल्याला वाट पाहावी लागते। तो हमें मिला हुआ समय को सही रीति में इस साल में मैं इस्तेमाल कर पाया है कि नहीं, जरूर पार करना पड़ेगा। आणि मला मिळालेली जी वेळ आहे ती योग्य रीतीने मी वापरू शकलो की नाही हे आपण परीक्षण करून बघायचं आहे। है ना। पिछले दिन में हम लोगों ने हमारे जीवन में प्रभु जो फर्क करता है उसका बारे में हम लोगों ने देख रहा था। मागील दिवसामध्ये प्रभू आपली कशा प्रकारे परीक्षण करतो याच्या संबंधाने आपण मनन करत होतो। मैं आशा करता हूँ सभी लोगों ने जीवन में थोड़ा फर्क होगा। आणि मला असं वाटतं की प्रत्येकाने स्वतःचं जीवन पारखलं असेल। उससे पहले हम लोग आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक अवस्था के बारे में देख रहा है। आणि त्याच्या अगोदर आपण आपल्या जीवनाची आत्मिक अवस्था आहे त्याच्या संबंधाने पाहत होतो। हम एक आत्मिक जन है क्या, आपण एक आत्मिक व्यक्ती आहोत का, ये भी परखना चाहिए। हे सुद्धा आपण पारखायला पाहिजे। है ना। आत्मिक जन को कैसे पहचानेगा, आणि एक आत्मिक व्यक्तीला आपण कसं काय ओळखणार। है ना। हमको जरूर हमें एक आत्मिक जन बनना बहुत जरूरी बात है, आपण एक आत्मिक राहणं गरजेचं आहे। लेकिन हमें आत्मिक जन है क्या, आपण खरोखर आत्मिक आहोत का। है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे बारे में चाहता है, जब मत्ती 5 अध्याय का 48 वचन में, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः आपल्याला अशा प्रकारे म्हणतो मत्ती सुसमाचार त्याचा 5 अध्याय आणि त्याच्या 48 वचनामध्ये, तुम सिद्ध बनो हाँ। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। देखो हमारा स्वर्गीय पिता जैसे सिद्ध है वैसे में सिद्ध बनना है। आणि ज्याप्रमाणे आपला स्वर्गीय पिता परिपूर्ण आहे त्याप्रमाणे आपण परिपूर्ण व्हायचंय। है ना। रोज रोज हमें इस कार्य में बैठना है, आणि दररोज या कामामध्ये आपल्याला वाढायचंय। हमारे जीवन में अगर हम देखेगा तो हमारे जीवन में बहुत कमी दिखता है। आणि आपण जर स्वतःचं परीक्षण केलं तर आपल्या जीवनामध्ये पुष्कळ प्रकारच्या कमतरता आपल्याला दिसून येतील। हमें उसको रोज दूर करना है, आणि दररोज आपल्या कमतरता ज्या आहेत त्या दूर करायच्या आहेत। रोज हमें मारना है। आणि दररोज आपल्याला मरायचंय। मारने का अर्थ क्या है, मरण याचा अर्थ काय आहे। स्वतःला नाकारणे। हाँ देखा, एक आदमी को याद है, कल बताया, कल सब लोग साउंड से बोलना चाहिए। आणि काल सांगितलं होतं फक्त एकाने सांगितलं सगळ्यांनी एका स्वरात बोलायला पाहिजे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। कम से कम जो कल नहीं आया उनकी बात अलग है, लेकिन कल आया हुआ लोगों को मैंने खास करके वो बात को उड़ाकर सिखाया था। आणि काल जे आले होते त्यांना विशेष करून ही गोष्ट प्रकर्षाने शिकवली होती। प्रियो, कई बार कई बातों में हमारा स्वयं आकर खड़ा हो जाता है, आणि पुष्कळ ठिकाणी आपला जो स्वयं आपला मीपणा आहे तो पुढे येऊन उभा राहतो। उसमें मानव प्रभु का महिमा नहीं होता। आणि त्याच्याद्वारे प्रभूचा गौरव होत नाही। इसलिए प्रेषित पौलुस बोलता है, मैं रोज मरता हूँ। आणि म्हणून प्रेषित पौल म्हणतो मी दररोज मरतो। जहां पर अपने आप को मुझे दिखाई देता है मैं उसको उसी टाइम पर खत्म कर देता आणि ज्या ठिकाणी माझा मीपणा मला दिसतो त्या ठिकाणी मी त्याला तिथेच संपवतो। हूँ। हमारे जीवन में कभी अपना माला स्वयं दिखाई देता है, आणि आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये कधी आपला मीपणा दिसतो का। शायद उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता होगा, आणि कदाचित त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला दुसरं काहीच दिसत नसेल। क्योंकि आज प्रभु का इच्छा जान करके उसकी इच्छा में बना रहने वालों की संख्या बहुत कम है। कारण प्रभूची इच्छा जाणून त्याच्या इच्छेमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या खूप कमी आहे। तो आज मेरा अवस्था कहाँ पर है, आज माझी अवस्था कुठे, हमें परखना चाहिए। आपण स्वतःला पारखायचंय। तो प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु प्रत्येकाला आशीर्वाद देव। आज प्रभु ने बहुत एक गहरा संदेश हमें दिया है, आणि एक गहन संदेश प्रभूने आज दिलेला आहे। बहुत प्रार्थना के साथ रह करके ये वचनों को सुनना पड़ेगा। आणि खूप प्रार्थनेपूर्वक राहून ही वचन तुम्ही ऐका। वचन सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना, आणि फक्त वचन ऐकणारे होऊ नका। उसको अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने जीवन को समर्पण करना। आणि ते आपल्या जीवनामध्ये आचरणात आणण्याकरता आपण आपलं जीवन समर्पित करायचंय। मुझे मालूम है कई लोग बहुत तकलीफ उठा करके प्रभु के लिए भाग करके आता है, बहुत भूख प्यास के साथ सुनते हैं। आणि मला माहिती आहे काही लोक जे आहेत ते पुष्कळ प्रकारच्या त्रासातून जाऊन खूप धावत पळत प्रभूच्या चरणाजवळ येतात, कारण त्यांना प्रभूची खूप तहानभूक आहे। प्रियो, हमारे अंदर वो भूख प्यास है कि नहीं, प्रियानो आपल्यामध्ये ती तहानभूक आहे का नाही, जरूर पार करना। आणि निश्चितच पारखा। तो प्रभु सबको सहायता करे। आणि प्रभू प्रत्येकाला सहाय्य करो। आज का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 13 वचन। आजच्या मरणाकरता आपण एक वचन वाचूया, पहिले पेत्र त्याचा 1 अध्याय आणि त्याचं 13 वचन। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मेल मिलाप थे। तुम्हें मिलने वाला है। आपको एक बार पढ़ो। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर हाँ।
और सचेत रहकर हाँ। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो उस अनुग्रह की पूरा आशा रखो। जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय हाँ। तुम्हें मिलने वाला है। देखिए, भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा एक आशा है प्रियो। आणि भक्ताकरता एक मोठी आशा आहे वो कब पूरा होगा? आणि ती केव्हा पूर्ण होणार? प्रभु यीशु मसीह की आगमन के दिन में वो बात पूरा हो जाएगा। प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या आगमनाच्या वेळेला ती गोष्ट पूर्ण होईल। क्योंकि ये आशा कौन दिया? आणि ही आशा आपल्याला कोणी दिली? ये आशा प्रभु ने दिया। आणि ही आशा प्रभूने दिली। है ना? रोमियों का पत्री उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन जब पढ़ेंगे, रोम त्याचा 15 अध्याय त्याचं 13 वचन ज्या वेळेला वाचू, हाँ, परमेश्वर जो आशा का दाता है हाँ। तुम्हें विश्वास करने में हाँ। सब प्रकार के आनंद हाँ। और शांति से परिपूर्ण करे हाँ। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हाँ। तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। देखा, ये आशा कौन दिया? आणि ही आशा कोणी दिली? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वराने दिली। परमेश्वर ने हमें आशा दिया। परमेश्वराने आपल्याला आशा दिली। प्रभु हमें आशा देने के बाद में वो आशा पूरा नहीं होगा, ऐसा ही क्या? आणि देवाने आपल्याला आशा दिल्यानंतर ती आशा पूर्ण होणार नाही असं आहे का? देखो, कोई मनुष्य अगर हमें आशा देगा, आणि कुठल्या मनुष्याने जर आपल्याला आशा दिली वो तर, आशा पूरा होना कोई जरूरी नहीं। आणि ती आशा पूर्ण होणं काही गरजेचं नाही। मैं अगला हमारा नया साल में 2023 में जनवरी महीना 4 तारीख को मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। एक आशा दिया। 4 जानेवारी 2023 ला मी तुम्हाला 1 लाख रुपये दिली, एक आशा दिली। मीटिंग खत्म होने से पहले मैं मर गया। आणि मीटिंग संपायच्या अगोदर मी मेलो। आशा पूरा होगा? आशा पूर्ण होईल का? वायदा ऐसे रह गया। आणि दिलेली जे वचन आहे ते तसंच राहून जाईल। परंतु प्रभु की बात ऐसा नहीं। आणि प्रभूचं बोलणं तसं नाही। प्रियो, हमारा आशा कभी भी भंग नहीं होगा, प्रियानो, आपली आशा कधी भंग होणार नाही, क्योंकि हमें आशा देने वाला प्रभु कभी भी नहीं मरने वाला है। कारण आपल्याला आशा देणारा प्रभू जो आहे तो कधी मरणार और नाहीये। आशा देने वाला प्रभु कभी भी पीछे हटने वाला नहीं। आणि आशा देणारा प्रभू कधी मागे जाणार नाहीये। और हमें आशा देने वाला प्रभु हमें दिया वो आशा पूरा करने के लिए सामर्थ्य रखता है। आणि आपल्याला ज्यांनी आशा दिलेली आहे तो प्रभू आपली आशा पूर्ण करायचं सामर्थ्य सुद्धा ठेवतो। हमें आशा देने वाला प्रभु विश्वास योग्य है। आपल्याला आशा देणारा प्रभु हा विश्वास योग्य आहे। धोखा देने वाला बोल दिया तो भी आशा करने का कोई बात नहीं होती। आणि मग आपल्याला एखादा जो फसवणार आहे त्यांनी जर आशा दिली तर मग काही उपयोग होत नाही। परंतु हमारा प्रभु कभी किसी को धोखा नहीं दिया प्रियो। आणि आपल्या प्रभूने कधी कोणाला धोका नाही दिला। हमारा प्रभु झूठ बोल ही नहीं सकता। आपला प्रभू कधी खोटं बोलूच शकत नाही। प्रभु ने हमें आशा दिया, प्रभूने आपल्याला आशा दिली। है ना? आज यहाँ पर बैठा हुआ हम सबको प्रभु आशा देने वाला मार्ग प्रभु का वचन है। आणि आपल्याला प्रत्येकाला आशा देणारा जो मार्ग तो म्हणजे त्याचं वचन आहे। देखिए, वचन सुनने के समय में भी प्रभु हर एक बहुत लोगों को कई बातों को वायदा करता है। आणि वचन ऐकत असताना प्रभू पुष्कळ गोष्टींचं अभिवचन आपल्याला देत राहतो। ये वायदा मेरे लिए करके पवित्र आत्मा उसको यकीन दिलाएगा। आणि हे अभिवचन माझ्या करता आहे, पवित्र आत्मा त्याला त्या गोष्टीचा निश्चय करून देतो। प्रियो, आज प्रभु डायरेक्ट आकर के किसी से बात नहीं करता, आणि प्रियांनो, आज प्रभू डायरेक्ट येऊन कोणाशी बोलत नाही, लेकिन वचन के द्वारा आज भी प्रभु काम करता है। आणि वचनाच्या द्वारे प्रभू आजही ते काम करतो। तो आज हमें जो आशा मिलता है वो वचन के द्वारा मिलता है। आणि आज आपल्याला आशा जी मिळते ती वचनाच्या द्वारे मिळते। है ना? रोमियों का पत्री उसका 15 अध्याय का 4 वचन। रोम त्याचा 15 अध्याय त्याचं 4 वचन। हाँ। जितनी बातें पहले से लिखी गई हाँ। वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है हाँ। कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रस्थान के द्वारा हाँ। आशा रखें। हाँ, देखा, वचन के द्वारा आशा रखे। आणि वचनाच्या द्वारे आपण आशा ठेवावी। वचन हमेशा स्थिर रहता है। आणि वचन नेहमी स्थिर राहते। वचन बदलता नहीं। वचन बदलत नाही। वचन देने वाला प्रभु बदलता नहीं, वचन देणारा प्रभू बदलत नाही, और प्रभु का वचन भी नहीं बदलता। आणि प्रभूचं वचन सुद्धा बदलत नाही। इस वचन के द्वारा प्रभु भक्तों को आशा देता आणि है। या वचनाच्या द्वारे प्रभू भक्तांना आशा देतो। कितना बड़ी बात है ना? किती मोठी गोष्ट आहे। प्रियो, वचन में जो भी लिखा है सत्य लिखा है। आणि वचनामध्ये जे लिहिलं आहे ते सत्य लिहिलं वो आहे। हमें जो भी वायदा देता है वो पूरा भी करता है। आणि आपल्याला तो जे काय अभिवचन देतो ते पूर्णही करतो। कई लोगों को ऐसे बातों पर प्रभु में विश्वास करता है, परंतु सब बातों में विश्वास नहीं करता। आणि ते लोक प्रभूवर विश्वास करतात पण सर्व गोष्टीवर विश्वास नाही ठेवत। कई लोगों को क्या लगता है, काही लोकांना काय वाटतं, मांगेगा तो मुझे प्रभु चंगा ही देगा, आणि जर मागितलं तर प्रभू मला आरोग्य देईल, प्रभु से मांगेगा तो मुझे खाना खिलाएगा। आणि प्रभूकडे मागितलं तर तो मला जीवन सुद्धा देईल। मतलब उनके विचार विश्वास सब सर्व ये दुनिया की बात है। आणि त्यांची आशा फक्त या जगाच्या गोष्टींवर आहे। ऐसा है क्या? असं आहे का? नहीं 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 प्रियो,
नाही ब्रँड उसको एक सच्चा विश्वासी नहीं बोल सकता आणि त्याला एक खरा विश्वासू नाही बोलू शकत. है ना. पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 19 वचन में कहता है, पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 15 अध्याय आणि त्याच्या 19 वचनामध्ये असं म्हटलंय, हाँ. यदि हम केवल इसी जीवन में हाँ. मनुष्य की आशा रखते हैं हाँ. तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं. देखा प्रेज द लॉर्ड. मरने के बाद कहा जाएगा मालूम नहीं, परंतु प्रभु जरूर मुझे चंगा ही देगा, पक्का विश्वास है. आणि मेल्यानंतर कुठे जाईल मला माहिती नाहीये, पण प्रभू मला आरोग्य देईल हा खूप मोठा विश्वास आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु चंगा ही करता है, आणि प्रभू आरोग्य पण देतो. परंतु मरने के बाद में भी कहा जाएगा, वो भी बात तो अपने आशा पाना चाहिए ना. आणि मेल्यानंतर कुठे जाणार या गोष्टीचा सुद्धा तुमची निश्चय राहायला पाहिजे, ती आशा प्रभूकडून प्राप्त करायला पाहिजे. अगर एक विश्वास है सिर्फ ये दुनिया की बातों में मतलब रह करके प्रभु में जीवन मिलाता है, तो प्रभु का वचन गाता है, वो सारा दुनिया के बाकी लोग है ना, बाकी अन्य जाति के लोग, उनसे भी अभागी है. आणि मग एखादा व्यक्ती फक्त एक विश्वासू आहे, तो आपल्याला फक्त या जगापासून मिळणारा जो लाभ आहे याच्या करताच जर प्रभूकडे पाहत आहोत, तर मग देवाचं वचन त्याच्या संबंधाने अशा प्रकारे म्हणतो की जे अन्य लोक या जातीचे लोक आहेत त्यांच्याही पेक्षा तो अधिक जास्त लाचार आहे. प्रयोग एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति, आणि प्रियांनो, एक खरा तारण प्राप्त झालेला व्यक्ती उदार पाते ही उसको प्रभु ये आशा देता है. आणि तारण प्राप्त झाल्यानंतर त्याला प्रभू आशा देतो. हमें कब आशा मिला, आपल्याला आशा केव्हा मिळाली? है ना. हम एक समय में आशा रहित होता, आणि एका वेळेला आपण आशा विरहित असे होतो. परंतु जिस व्यक्ति ने सच्चा उदार पाया, आणि ज्या व्यक्तीने खरं तारण प्राप्त केलं उस समय में उसको आशा भी मिली. आणि त्यावेळेला त्याला आशा सुद्धा है मिळाली. ना. जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 24 वचन में पढ़ता है, रोम- 24-25 दोनों पढ़िएगा. रोम त्याचा 8 अध्याय 24 आणि 25 वचन. इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. देखा, इस आशा की द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. उदार हुआ, मतलब उदार पाए हुए लोगों में ये आशा रहता है. आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांमध्ये ही आशा राहते. हाँ, पढ़ा. परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है हाँ. जब वह देखने में आए हाँ. तो फिर आशा कहाँ रही, हाँ. क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है हाँ. उसकी आशा क्या करेगा. हाँ. परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते हाँ. यदि उसकी आशा रखते हैं हाँ. तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं. वाह 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 वाह. देखो, हमने किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, आणि आपल्यापैकी कोणी प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाही पाहिलं, प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु को नहीं देखा. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कलवरी वधस्तंभाला नाही पाहिलं, शायद इधर बैठा हुआ कोई भी यरूशलेम में जा करके ये बात को देखा भी नहीं. आणि कदाचित आपल्यापैकी कोणी यरूशलेमला गेलं नाही आणि या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या सुद्धा नाही. कोई गया क्या? कोणी गेलं का? हाँ, शायद मेरा जानकारी में नहीं गया, आणि माझ्या माहिती अनुसार नाही गेलं, क्योंकि हमको वचन में विश्वास है ना. कारण त्यांना वचनावर विश्वास आहे ना. मैं थॉमस की ऐसा आ करके मैं मेरा अंगुली डाल करके देखेगा, मैं विश्वास करेगा, ऐसा बोलने वाला हम नहीं है ना. आणि थोमा ज्याप्रमाणे म्हटलं होता की तुझ्या छेदलेला जो हात आहे त्याच्यामध्ये मी माझी करंगळी टाकून मी बघेल की खरोखर ते तसं आहे का नाही, अशा प्रकारे अविश्वासी आपल्यापैकी कोणी नाहीये. भैया, हम लोग ने ये बात सुना है, उधर जा करके देख करके आया वो लोग बोला है यीशु मसीह की कब्रिस्तान हमने देखा और उधर बाहर लिखा है वह यहाँ पर नहीं है, जी उठा है. आणि मग असे काही लोक आहे की जे खरोखर यरूशलेम मध्ये गेले, त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताची कबर पाहिली आणि त्या ठिकाणी असं लिहिलेलं त्यांनी वाचलं सुद्धा की तो या ठिकाणी नाहीये, तो जिवंत झालेला आहे. अरे तो हम उनके पहले ही विश्वास किया ना, आणि ते त्यांच्या अगोदर आम्ही विश्वास केला ना, हमें वचन मिला तभी विश्वास किया ना. आणि ज्या वेळेला आम्हाला वचन मिळालं त्याच वेळेला आम्ही विश्वास केला. भैया, देखा हुआ बात सिर रहना कोई जरूरी नहीं. आणि ज्या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत त्याच्यावरच विश्वास करणं काही गरजेचं नाही. जब पहला दूसरा कोरिन्दी 4 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, दुसरे करंथीकराचं पत्र 4 अध्याय आणि त्याच्या 18 वचनामध्ये अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं हाँ. परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, हाँ देखिए, अंधे की वस्तुओं को हम देखते रहता है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, थोड़ी दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है. सदा बनी रहता है. प्रियो, सदा बनी रहने वाली अनदेखी वस्तुओं की आशा हमें हम लोग जीवन मिलाता है. आणि चिरकाल स्थिर राहणाऱ्या गोष्टीच्या आशेमध्ये आपण राहतो. वो बहुत बड़ी बात है. आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. एक मसीह जीवन एकदम आशा से भरा हुआ जीवन है. आणि ख्रिस्ती जीवन आशेने भरलेलं जीवन आहे. एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति का हर एक काम से मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति का उदार हुआ है. आणि तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीच्या प्रत्येक कामाच्या द्वारे समजतं की या व्यक्तीचं तारण झालेलं आहे. तो उनका हर एक बातों में वो आशा का कार्य दिखाई देगा. आणि त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्या आशेचं कार्य दिसते. Praise the Lord. आज हमारे जीवन को देख करके मुझे में प्रभु में आशा है, ऐसा एक बात प्रकट होने लायक मेरे जीवन है क्या. आणि आज जर माझं जीवन जर मी पारखलं तर माझ्या जीवनाच्या मध्ये प्रभूची एक आशा आहे, अशा प्रकारचं प्रदर्शन करणारं एक जीवन आहे का. आज यहाँ पर बैठे मुझे हमें सुनने वालों में कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में है. आमेन.
सुना है की नाही? Praise the Lord. आज या ठिकाणी बसलेल्या किती लोकांना या गोष्टीचा विश्वास आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्यामध्ये आहे. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. देखो यहाँ पर यीशु मसीह है, वहां पर पिता भी है, पवित्र आत्मा भी है. आणि ज्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त आहे त्या ठिकाणी पिता पण आहे आणि पवित्र आत्मा पण आहे. जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहां पर पुत्र भी है, पिता भी है. आणि ज्या ठिकाणी पवित्र आत्मा आहे त्या ठिकाणी पिता पण आहे आणि पुत्र पण आहे. जहाँ पर पिता है वहां पर पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है. आणि ज्या ठिकाणी पिता आहे त्या ठिकाणी पुत्र पण आहे आणि पवित्र आत्मा पण आहे. ये कभी भी अलग रहता ही नहीं. आणि हे तिघं कधी वेगळे राहत नाही. Praise the Lord. Praise the Lord. बहुत बड़ी बात है. आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. इसको बोला आज हमारे साथ कौन कौन है? याचा अर्थ आज आपल्यासोबत कोण कोण आहे? त्रिएक परमेश्वर. हाँ, क्योंकि देखो नया जन्म पाया वो लोग जो प्रभु का वचन मान करके चलता है, वहां पर यीशु मसीह ने एक गवाही दिया हुआ बात आपको याद होगा, यूहन्ना 14 अध्याय का 23 वचन. यीशु ने योहान त्याचा 14 अध्याय त्याचं 23 वचन. ये वचन, ये तो वचन है ना, ये एक तो अनमोल वचन है. Yes, amen. हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ. यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ. तो वह मेरे वचन को मानेगा हाँ. और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा हाँ. और हम उसके पास आएंगे हाँ. और उसके साथ वास करेंगे. वाह 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 वाह. देखा, ऑलरेडी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र उसके आत्मा आपल्यामध्ये आहे. और उसके साथ यीशु मसीह बोलता है मैं भी आऊंगा और पिता भी आएगा, हमारा हेडक्वार्टर तू रहेगा. आणि मग त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त असं म्हणतो की पिता पण येईल आणि मी पण येईल आणि आमचं जे हेडक्वार्टर आहे ते तू राहशील. क्या महनीय बात है प्रियो. आणि काय महनीय गोष्ट आहे प्रियांनो. है ना, मतलब 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह जब वो दुनिया में था तब वो स्वर्ग में भी था. आणि 33.5 वर्ष प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला पृथ्वीवर होता त्याच वेळेला तो स्वर्गामध्ये सुद्धा होता. ये बात बहुत एक बड़ा हमारे समझने वाला बात है. आणि ही गोष्ट खूप समजणारी गोष्ट आहे. वो मानव प्रसन्नता मतलब उपस्थिति के अनुसार देखेगा तो स्वर्ग में भी उनका उपस्थिति था, परंतु व्यक्तिगत में देखेगा तो दुनिया में. आणि वास्तव्यात जर बघायचं झालं तर प्रभू येशू ख्रिस्त जे आहे ते स्वर्गामध्ये सुद्धा उपस्थित होता आणि तो पृथ्वीवर सुद्धा वैयक्तिकरित्या उपस्थित होता. मेरा शायद हिंदी भाषा थोड़ा कमजोर है. बोले कि मालूम प्रभु का सान्निध्य स्वर्ग में था, प्रभु का उपस्थिति दुनिया में था. प्रभूचा जो सहवास आहे तो स्वर्गामध्ये होता पण त्याची वैयक्तिक उपस्थिती जी होती ती या पृथ्वीवर होती. जैसा यूहन्ना 3:13 में यीशु मसीह बोलता है, योहान त्याचा और तिसरा प्रभु के वचन में लिखा है, योहान त्याचा 3 अध्याय 13 वचनामध्ये प्रभूच्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे. हाँ. स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, हाँ. केवल वही हाँ. जो स्वर्ग से उतरा, हाँ. अर्थात मनुष्य का पुत्र हाँ. जो स्वर्ग में है. देखा वो स्वर्ग में भी है आणि तो स्वर्गामध्ये सुद्धा आहे परंतु उस समय में दुनिया में है. आणि त्यावेळेला तो जगामध्ये आहे. दुनिया में है तब स्वर्ग में भी है. आणि ज्या वेळेला जगामध्ये त्यावेळेला स्वर्गामध्ये पण आहे. उसका अवस्था अंदर आप समझना. आणि ती परिस्थितीची अवस्था जी आहे ती समजून घ्या. व्यक्तित्व में दुनिया में है आणि वैयक्तिकरित्या तो जगामध्ये जिवंत आहे परंतु मतलब एक प्रकार का उपस्थिति स्वर्ग में भी है. आणि एक प्रकारचा सहवास जो आहे तो स्वर्गामध्ये सुद्धा आहे. अभी पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व में वो दुनिया में है पेंटेकोस्त का दिन से. आणि पेंटिकोसच्या दिवसापासून पवित्र आत्मा जो आहे तो या जगामध्ये उपस्थित आहे. लेकिन साथ ही साथ पवित्र आत्मा स्वर्ग में भी है. आणि त्याच्या सोबत त्याचा सहवास स्वर्गामध्ये सुद्धा आहे. जैसा पुत्र मतलब दुनिया में रहने के समय में वो स्वर्ग में भी उनकी उपस्थिति था. आणि पुत्र ज्या वेळेला जगामध्ये होता त्यावेळेला त्याची उपस्थिती स्वर्गामध्ये सुद्धा होती. लेकिन इसी प्रकार त्याचप्रमाणे एक व्यक्ति में जब पवित्र आत्मा जब आ जाता है आणि एका व्यक्तीमध्ये ज्या वेळेला पवित्र आत्मा येतो उसमें पुत्र भी है, त्याच्यामध्ये पुत्र पण आहे, पिता भी है. पिता पण आहे. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. कितने लोग समझ में आ रहे हैं? आमेन. हम त्रिएक परमेश्वर के साथ हम जीवन बिताते हैं. त्रिएक परमेश्वरासोबत आपण जीवन जगतो. जब यूहन्ना पत्र लेने के टाइम पर बोलता है ना हमारा संगति किसके साथ क्या है? पिता के साथ पहला अध्याय का 3रा वचन. पहिलं योहान पहिला अध्याय त्याचं 3रं वचन. सब कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हाँ. इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो. हाँ. और हमारी यह सहभागिता हमारा ये सहभागिता पिता के साथ हाँ. और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है. इसका मतलब वहां पर कितने लोग आए? आणि याचा अर्थ त्या ठिकाणी किती लोक आले? 4 लोग आए. हमारा उसको मिला करके. हाँ वो बात है. सब लोग समझ गए. हाँ प्रभु का धन्यवाद. की मंडली ऐसा मुझे मालूम है बालेवाड़ी के लोग नहीं है, लेकिन कुछ बालेवाड़ी के लोग है इसलिए हमको थोड़ा बोलना पड़ता है.
आणि नाशिकची जी मंडळी आहे ते काही बालवाडीचे मुलं नाहीये, पण त्याच्यापैकी काही लोक आहेत त्यांच्याकरता बोलावं लागतं मतलब कुछ नए लोग हैं, आणि काही नवीन लोक कोई उधार नहीं पाया वो लोग भी हैं। आणि काही तारण न प्राप्त झालेले लोक इसलिए कभी कभी थोड़ा हल्का रीति में भी जाता है तो आपको ऐसा हल्का नहीं लगना। आणि काही वेळेला असं एकदम खगोल सांगावं लागतं तरी तुम्ही त्या वेगळ्या उद्देशाने घेऊ नका। प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन को बहुत गौरव है। देवाच्या वचनाचं खूप गांभीर्य आहे तो अभी हर एक पवित्र लोग ये बात को जानता है, आणि प्रत्येक पवित्र भक्त या गोष्टीला जाणतो ये बात दुनिया के लिए भी एक भेद है। आणि ही गोष्ट जगासाठी सुद्धा एक रहस्य आहे। नहीं तो कई लोग ऐसा हमारे साथ व्यवहार नहीं करता। नाहीतर मग जगाचे लोक आपल्यासोबत अशा प्रकारचा व्यवहार केला नसता। कौन सा ऐसा भेद है आणि असं काही रहस्य आहे ना? पड़ोसियों पहला अध्याय का 27 वचन। कलसीकराचं पत्र पहिला अध्याय 27 जिन वचन। पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हाँ। कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में हाँ। उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। देखा, अन्य जातियों में उस महिमा का भेद का मूल्य क्या है? आणि मग परराष्ट्रांमध्ये त्या गौरवाचं रहस्य काय आहे ये एक भेद है प्रियो। आणि हे एक रहस्य आहे वो क्या है मालूम है? आणि ते काय लोगों को मालूम नहीं, आणि लोकांना माहिती नाही शायद मुझे सुनने वाला आपको भी नहीं मालूम है। तो आणि मला ऐकणार तुम्हाला पण माहिती नाही तर ये तो फिर दुखदायक बनेगा ना। आणि हे तर खूप दुःखदायक राहील। वो क्या है? ते काय आहे और वह यह है वो कि ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है हाँ। तुम में रहता है। हालेलुया आमेन। है, मसीह जो महिमा की आशा हमारे में रहता है। आणि ख्रिस्त जी गौरवाची आशा आहे ती तुमच्यामध्ये राहतो। Praise the Lord. Praise the Lord। कई लोग नींद में होकर के सुनता है। आणि काही लोक झोपेत ऐकतात। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। है ना, मुझे वहां से ना एकदम वचन वापस आता है, इसलिए उसके ऊपर मैं दृष्टि करता हूँ। आणि ते इथून वचन वापस येतं म्हणून त्यांच्याकडे पाहतो। सोना नहीं है, झोपू नका, ये प्रभु का वचन है। हे प्रभूचं वचन आप आहे। प्रभु को तुच्छ मत करो। प्रभूला तुच्छ करू नका। ये बात कई बार बोलना पड़ रहा है, आणि पुष्कळ वेळा सांगावं लागतं दुखदायी बात है। आणि हे दुःखदायक आहे। तो अभी ये बात को जानना है कि प्रियो हमारे में कौन है? महिमा का आशा मसीह है। आणि आपल्यामध्ये कोण आहे तर गौरवाची आशा ख्रिस्त आहे। है ना, रोमियों का पत्री में हम पढ़ता है 8 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में। रोम त्याचं 8 अध्याय त्याचा 9 आणि 10 वचनामध्ये परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, इसका हाथ में रहता। परमेश्वर का देखा, इसमें वहां पर क्या आ गया? याचा अर्थ तिथे काय आलं परमेश्वर की आत्मा भी आ गया। आणि देवाचा आत्मा पण आला। अभी आगे पढ़ेगा तो पुढे वाचलं तर तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हाँ। परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ। यदि किसी में मसीह का आत्मा अभी कौन सा आत्मा आया? मसीह के आत्मा। मसीह की आत्मा। ऑलरेडी पवित्र आत्मा में है ही। आणि पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये आहेच आणि या ठिकाणी आता मग ख्रिस्ताचा आत्मा आला। सबको समझ में आ रहा है? सगळ्यांच्या लक्षात येत आहे ये बातों को बहुत लोग नहीं समझता। आणि पुष्कळ लोक या गोष्टीला नाही समजत। और आगे बढ़िए। तो वह उसका जन नहीं। हाँ। यदि मसीह तुम में है हाँ। तो देह पाप के कारण मरी हुई है, हाँ। परंतु आत्मा हाँ। धर्म के कारण जीवित है। देखो, बहुत बड़ी बात है कि हमें ये यकीन करना है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे की या गोष्टीचा आपल्याला निश्चय करायचा आहे। मतलब प्रभु की आत्मा मुझ में है कि नहीं? आणि प्रभूचा आत्मा माझ्यामध्ये आहे का पवित्र नाही? आत्मा मुझ में है कि नहीं? आणि पवित्र आत्मा माझ्यामध्ये आहे का मसीह नाही? की आत्मा मुझ में है कि नहीं? ख्रिस्ताचा आत्मा माझ्यामध्ये आहे का नाही? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। है ना, इसलिए ना मतलब आत्मा अगर है तो व्यक्ति सच्चा विश्वास में। आणि जर आत्मा आहे तर मग तो व्यक्ती खरा विश्वासू आहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। है ना, एक व्यक्ति अगर सच्चा विश्वासी है तो उसमें प्रभु की आत्मा है। आणि एक व्यक्ती जर खरा विश्वासू आहे तर त्याच्यामध्ये प्रभूचा आत्मा आहे। आज भी बहुत लोग विश्वासी बोलता है परंतु प्रभु की आत्मा उसमें नहीं है, तो खरा विश्वास मतलब सच्चा विश्वास नहीं। आजही लोक विश्वासू म्हणतात पण प्रभूचा आत्मा जर त्याच्यामध्ये नाही तर मग तो खरा विश्वासू नाही। है ना, एफिसियों उसका 3 अध्याय का 17 वचन। इफिसकराचं पत्र 3 अध्याय 17 वचन। या। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। देखा, मसीह हमारे हृदय में कब बसेगा? आणि ख्रिस्त आपल्यामध्ये केव्हा येईल? विश्वास के द्वारा। विश्वासाच्या द्वारे। प्रियो, विश्वास के द्वारा मसीह हमारे में बसेगा। आणि विश्वासाच्या द्वारे ख्रिस्त आपल्यामध्ये राहील। आज अगर हमें विश्वास है तो आज आपल्याला विश्वास आहे तर तो मसीह हमारे में रहेगा। आणि ख्रिस्त आपल्यामध्ये राहील। है ना, हर एक पवित्र लोग पारखना चाहिए। आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने हे पारखायला पाहिजे। है ना, मैं विश्वास में है क्या? मी विश्वासात आहे का? आपको याद होगा जब दूसरा कुरिन्दी उसका 13 अध्याय है, उसका 5 वचन में लिखा है। दुसरे करंदीकराचं पत्र 13 अध्याय आणि त्याच्या 5 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे आपल्याला म्हणत आहे। अपने आप को परखो हाँ। कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ। अपने आप को जांचो। हाँ। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते हाँ। कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ। यदि नहीं तो हाँ। तुम जांच में निकम में निकले हो। ओ देखा प्रियो, हमारे जीवन में
यीशु मसीह का स्थान दूसरा कोई छीन सकता है? आणि आपल्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे स्थान आहे ते स्थान दुसरं कोणाला तरी मिळू शकतं. वो कौन है? ते कोण आहे? यीशु मसीह का स्थान दूसरा लेता है तो वो कौन है? वो आणि एक व्यक्ती जो प्रभू येशू ख्रिस्ताचं स्थान घेतो तो व्यक्ती कोण आहे मग? शैतान. उसको मतलब दुनिया के रीति में या प्रभु यीशु मसीह की भाषा में बोलेगा तो मत्ती 6:24. मत्ते 6:24 वचन. दुसरा स्वामी. कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता. हाँ. क्योंकि वह एक से बैर हाँ. और दूसरे से प्रेम रखेगा. हाँ. एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. हाँ. तुम परमेश्वर और धन हाँ. दोनों की सेवा नहीं कर सकते. देखा, परमेश्वर और धन. परमेश्वर आणि धन या दोघांची सेवा तुम्ही नाही करू शकत. देखो, आत्मिक लोग धोखा खाने वाला एक बहुत बड़ा बात यहाँ इसके अंदर है. आणि आत्मिक व्यक्ती खूप मोठ्या फसगतीमध्ये फसण्याची एक गोष्ट या ठिकाणी आहे. तो आम रीति में जानता है कि दुनिया का ईश्वर कराने वाला शैतान. आपण सर्वसाधारण रीतीने जाणतो की जगाचा ईश्वर म्हटला गेलेला शैतान. लेकिन मतलब वो धोखा देने वाला उसकी साधना वो धन है. आणि मग जो फसवणारा आहे त्याचं ते शस्त्र काय आहे तर धन आहे. ये धन के द्वारा धन एक स्वामी बनकर के एक जीवन में आ गया है तो वो आत्मिक जीवन में गिरावट पाता है. आणि धन एक स्वामी म्हणून आपल्या जीवनामध्ये जर आला तर मग ते आत्मिक जीवनामध्ये पतन पावण्याची गोष्ट होते. है ना. हमें मतलब हमें धनवान होना चाहिए. आणि आपण श्रीमंत राहायला पाहिजे. किस बात का धनवान? आणि कुठल्या गोष्टीमध्ये श्रीमंत राहायला पाहिजे? है ना. हमें यीशु मसीह को प्राप्त करने में मसीह में धनवान होना चाहिए. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्राप्त करण्यामध्ये ख्रिस्तामध्ये आपण धनवान राहायला पाहिजे. हमें बहुत धन के बारे में, विश्वास के धनवान के बारे में हमने सीखा है. आणि विश्वासामध्ये धनी असणाऱ्या संबंधाने आपण मनन केलेलं आहे. है ना. बहुत बातों में हमें हमारे ज्ञान में धनवान बनना. आणि ज्ञानामध्ये आपण श्रीमंत व्हायचे. है ना. बहुत बातों में जो धनवान किन किन बातों में होना चाहिए हमने क्लास में आपको बताया. आणि कुठल्या कुठल्या गोष्टीमध्ये आपण श्रीमंत राहायला पाहिजे हे क्लासमध्ये सांगितलेले आहे. आत्मिक विषय में हमें धनवान होना चाहिए. आणि आत्मिक विषयामध्ये आपण धनी राहायला पाहिजे. ये प्रभु का दृष्टि में मूल्यवान बात है. आणि प्रभूच्या दृष्टीने हे मोलवान आहे. है ना. प्रभु ने एक बार एक दृष्टांत बताया था. आणि एकदा प्रभूने एक दृष्टांत सांगितला हम होता. ये कई रीति में हमारा आत्मिक यात्रा में हम लोग धोखा खाने वाली बातों से बचाने के लिए हमारे प्रभु कितना सरल ढंग में दृष्टांत के द्वारा वो बात समझाता है. आणि आपल्याला आत्मिक जीवनामध्ये आपण फसले जाण्यापासून वाचण्याकरता प्रभू किती सरळ रीतीने आपल्याला दृष्टांत सांगतो. है ना. जब लूका के सुसमाचार में देखो, बहुत ध्यान से सुनना. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोगों के जीवन में एक समय में आशा था, वो आशा टूट गया अभी, क्योंकि उनकी स्वामी कुछ और हो गया. तो ऐसा बातों पर फिर उनको आशा नहीं रहा. फिर उनके जीवन में आत्मिक जीवन में बहुत जल्दी गिरावट आ जाता है. आणि खूप लक्ष देऊन ऐका, लोकांना एका वेळेला त्यांच्या जीवनामध्ये आशा होती, पण आता त्यांची आशा जी आहे ती तुटली गेलेली आहे. कारण आता त्यांची आशा या जगाच्या धनसंपत्तीकडे आहे. कोई भी ऐसा गिर सकता है, आणि कोणीही अशा प्रकारे पडू शकतो, धोखा कर सकता है. फसू शकतो. एक प्रभु ने एक बात बताया, जब लूका उसका 12 अध्याय है, उसका 15 से 21 तक का वचन. लूक त्याचा 12 अध्याय 15 ते 21 वचन. और उसने उनसे कहा, हाँ. चौकस रहो और हर प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखो. हाँ. क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होती. हाँ. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा. हाँ. किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई. बहुत ध्यान से सुनना. देखो, बहुत गहरा बात है. यीशु मसीह एक एक बात जो दृष्टांत में बताता है ना, वो आत्मिक गहराई समझने के लिए है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जो एक एक दृष्टांत आपल्याला सांगतो ते आत्मिक गहनता समजण्याकरता आहे. यहाँ पर एक कहानी सुना रहा है प्रभु. आणि या ठिकाणी एक गोष्ट प्रभू सांगत आहे. मतलब एक धनिक मूर्ख का कहानी. आणि एक श्रीमंत मूर्खाची गोष्ट. कैसा क्या? ते कसं काय? एक धनिक मूर्ख का कहानी. आणि एक श्रीमंत मूर्खाची गोष्ट. आपका बाइबल का उसमें हेडिंग में ऐसा कुछ लिखा है क्या? एक धनवान धनवान मूर्ख का दृष्टांत. ओके. तो मेरा बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं वो व्यक्ति को वही नाम देता है. आणि माझ्या बायबल मध्ये नाही लिहिलेलं, पण मी त्या व्यक्तीला तेच नाव देतो. मेरा धनिक मूर्ख का कहानी. आणि श्रीमंत मूर्खाची गोष्ट. तो ये मतलब व्यक्ति ने क्या किया, अभी आप ध्यान से सुनना, कहानी सुनना. तब वह अपने मन में विचार करने लगा, हाँ. मैं क्या करूं? हाँ. क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं. हाँ. और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखालियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा. हाँ. और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा. हाँ. और अपने प्राण से कहूंगा हाँ. कि प्राण, तेरे पास बहुत
देखा प्राण प्राण उसको प्राण से बहुत प्रेम है। आणि त्याचं आपल्या जीवावर खूप जास्त प्रेम आहे. प्रभु ने क्या बोला? प्रभूने काय म्हटलं? जो अपना प्राण बचाना चाहता है वो खोएगा। आणि जो कोणी आपला जीव वाचू पाहतो तो त्याला नष्ट करेल. ये धनवान अपने प्राण को बहुत प्रिय जानता है। आणि हा जो श्रीमंत व्यक्ती आहे तो आपल्या जीवावर खूप जास्त प्रेम वो करतो अपना प्राण से कहता है आणि तो आपल्या जीवाला अशा प्रकारे म्हणतो, ये प्राण आणि हे माझ्या जीवा, तुम अभी 200 साल जिएगा। आणि तू आता 200 वर्ष जगशील. ऐसे नहीं लेगा, मैं अपनी तरह से बोलूंगा असं नाही लिहिलं, मी माझ्यातर्फे सांगत आहे. बहुत दिन के लिए, आणि खूप दिवसाकरता मतलब बहुत साल के लिए। आणि पुष्कळ वर्षाकरता. वो उसका प्लान है कि मैं जल्दी मरने वाला नहीं, आणि त्याचा असा विचार आहे की मी आता लवकर मरणार नाही. इसलिए मेरा प्राण आणि हे माझ्या जीवा, तुम कभी भी दुनिया में क्या पिएंगे करके सोच करके घबराओ मत। आणि या जगामध्ये राहत असताना काय खाशील पिशील याचा विचार तू करत बसू नको. बहुत प्राप्त किया है। आणि खूप कमवलंय. और वो क्या बोलता? आणि तो काय म्हणतो? हाँ, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। देखो बहुत साल के लिए बहुत संपत्ति। आणि पुष्कळ वर्षाकरता पुष्कळ संपत्ती आहे. हाँ, आगे। चैन कर, हाँ, खा पी, हाँ, सुख से रह। हाँ, परंतु हाँ, ये सब वो अपने से कहता है। आणि तो स्वतःहून आपल्या जीवाला अशा प्रकारे म्हणतो, म्हणजे तो आपल्या मनाच्या विचाराने असा प्रकारे विचार वो करतोय. व्यक्ति किसी का कोई लूटा नहीं, आणि त्या व्यक्तीने कोणाचं काही हिरावून नाही घेतलेलं, वो कोई बदमाश नहीं, आणि तो काही बदमाश नाहीये, वो किसी का लूट करके इकट्ठा नहीं किया, आणि कोणापासून हिरावून त्याने एकत्र नाही केलेलं, उसको फसल मिला, आणि त्याला पीक मिळालं, उसने अपना भंडार बड़ा करके मैंने इकट्ठा किया। आणि त्याने आपल्या कोठऱ्या मोठ्या केल्या आणि त्याच्यामध्ये ते साठवलं. क्या दोष है? त्याच्यात त्याचा दोष काय? Praise the Lord. दोष लगाने वाला कौन है? दोष लावणारा कोण आहे? है ना? दोष है कि नहीं मालूम करेगा किससे? आणि त्याच्यामध्ये दोष आहे का नाही हे कसं काय समजणार? देखो हमें हर एक बात अच्छा भी लग सकता है, आणि एखादी गोष्ट आपल्याला प्रत्येक चांगली गोष्ट वाटू शकते, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो बात क्या है? उसका है महत्व। आणि देवाच्या दृष्टीने त्या गोष्टीचं काय महत्व आहे ते सगळ्यात महत्वाचं आहे. ये समझ में आ रहा है क्या? आमेन. आणि हे लक्षात येत आहे का? अभी ये सब बोल करके वो बहुत तसल्ली में है, आणि हे सगळं तो बोलून त्या खूप समाधान करत आहे. क्योंकि वो उसको लगता है कि मैं और भी 100 साल जिएंगे, आणि त्याला असं वाटतं की अजून मी 100 वर्ष जगेल, 100 साल जिएगा तो मैं 200 साल का इकट्ठा किया है, आणि मी जर 100 वर्ष जगणार आहे तर 200 वर्षाचं मी एकत्र करून घेतलंय, ढेर धूमधाम जी सकता है। आणि खूप ऐशो आरामात मी जगू शकतो. उसने किसी का नुकसान के बारे में नहीं सोचा, आणि कोणाचं नुकसान व्हावं असा विचार नाही केला, वो किसी को कुछ भी नुकसान नहीं किया। आणि त्याने कोणाला काही नुकसान नाही केलं. ऐसे सोचेगा तो अपनी तरफ से उसने कोई पाप नहीं किया, आणि आपण जर असा विचार केला तर त्याने कुठलं पाप नाही केलं. लेकिन स्वर्ग ने उसको एक नाम दिया। आणि स्वर्गाने त्याला एक नाव दिलं. शायद दुनिया के लोग भी बोलेगा बड़ा बुद्धिमान है, आणि कदाचित जगाचे लोक त्याला म्हणतील की तो खूप हुशार आहे, बहुत बुद्धिमान समझदार आहे, है। तो समजदार आहे. ये सब हम लोग दुनिया के लोग बोल सकते हैं, आणि हे सगळं आपण जगाचे लोक समजू शकतो. लेकिन स्वर्ग ने क्या बोला? आणि स्वर्गाने त्याला काय देखो, म्हटलं? आज स्वर्ग हमारे बारे में क्या गवाही दे रहा है वो है महत्व का बात। आणि आज प्रियांनो स्वर्ग आपल्या संबंधाने काय साक्ष देतो हे आहे महत्वाचं. स्वर्ग क्या बोला? स्वर्ग काय म्हटला? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, देखा, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, है? हे मूर्ख. ऐसे क्यों बोला? असं काय म्हटलं? है? हाँ, उसका कारण भी प्रभु ने वहां पर लिखा है। आणि त्याचं कारण सुद्धा प्रभूने त्या ठिकाणी लिहिलंय. हाँ, इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। अरे बात तू 100 साल सोच रहा था, एक ही दिन भी तेरा पूरा नहीं। आणि तू 100 वर्ष विचार करत होता पण एक दिवस सुद्धा तू जागणार अभी नाही. थोड़ा घंटा रह गया, घंटा। आणि फक्त काही तास राहिले. हाँ, और आगे? तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है हाँ। वह किसका होगा? हाँ। ऐसा ही वह मनुष्य भी है हाँ। जो अपने लिए धन बटोरता है, हाँ। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। मतलब परमेश्वर के विषय में वो धनी नहीं। आणि देवाच्या दृष्टीने तो धडी नाही. मतलब उसमें एक शब्द आप लोगों का खो गया लगता है, परमेश्वर के बारे में जो है उस विषय में वो धनी नहीं। आणि देवा संबंधाने जे काही आहे त्याच्यामध्ये तो धडी नाही. आप लोगों का वो मराठी में वाचा थोड़ा आखिरी शब्द। जो कोणी स्वतःसाठी द्रव्य संचयन करतो हाँ। व देव विषयक बाबतीत हाँ, देखा, मराठी में आ गया, लेकिन हिंदी में इतना नहीं आया, इसलिए कभी कभी आपको पढ़ने के टाइम मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि इतना शॉर्ट में नहीं जाएगा वो बात, है ना? बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हमको धन भी खर्चा करके परमेश्वर के विषय में धनी बनना है। आणि धन जरी आपल्याला खर्च करावा लागला तरी सुद्धा देवाच्या दृष्टीने आपल्याला धनी व्हायचं आहे. प्रियो, आज स्वर्ग देखता है तो आपको मालूम है कई लोग प्रभु के लिए समय नहीं, वो समय भी दुनिया के धन के पीछे भाग रहे हैं।
आणि आज लोक काय आहे की त्यांना प्रभू करता वेळ नाहीये, त्यांच्याकडे जो वेळ आहे तो फक्त जगाची धन संपत्ती मिळवण्याकरता ते पळत आहे. उनको लगता है कि मैं 4 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके रखूं. आणि त्यांना असं वाटतं की 4 पिढी करता मी पैसे जमा करून ठेवावे. मेरा कैसा ऐसे कभी कभी कोई लोग बोलता भी है, आणि काही लोक असं बोलता पण, मैंने 4 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके रखा है. आणि 4 पिढी करता मी एकत्र करून ठेवलंय. प्रियो, धोखा मत खाना. प्रियानो, फसू नका. देखो, धन इकट्ठा करके रखना ऐसे कोई पाप नहीं, आणि पैसे जमा करून ठेवणं पाप नाहीये. लेकिन आप आत्मीय जीवन को भेज करके धन के पीछे भागता है तो प्रभु का दृष्टि में वो बड़ा पाप है. आणि आत्मिक जीवन तुम्ही विकून जर धन पैसे एकत्र करता तर मग ते देवाच्या दृष्टीने पाप आहे. आप उसको कोई गलत ना समझे. याला कोणी चुकीचं समजू नका. आप कितनों भी करोड़ों कमाओ, कोई पाप नहीं. आणि तुम्ही करोडो रुपये कमवा, काही पाप नाही. लेकिन आप प्रभु को जैसा सम्मान करना चाहिए, प्रभु के लिए जो समय देना चाहिए, आत्मीय के विषय में कंगाल बनते हुए दुनिया का बातों में अमीर बन करके उसमें प्रशंसा सोचेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा. आणि जी वेळ तुम्ही देवाला द्यायला पाहिजे ती वेळ जर तुम्ही पैसे कमवण्याकरता किंवा धन संचय करण्याकरता जर घालवली तर मग ती गोष्ट खेददायक आहे. आपका जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान होना ही चाहिए. तुमच्या जीवनाचं प्रथम स्थान हे प्रभू राहायला पाहिजे. वो प्रथम स्थान धन नहीं ले जाना चाहिए. आणि ते प्रथम स्थान पैशाने घ्यायला नको. अरे आपको मालूम है, कई लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी उनका धन मतलब ध्यान पूरा उनके धन के ऊपर है. आणि आज लोक प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसलेले असताना सुद्धा त्यांचं सगळं लक्ष त्या पैशाकडे. अभी देखो, मन को जांचने वाला प्रभु ये बात को जानता है. आणि मन जाणणारा प्रभू या गोष्टीला पारखतो. नहीं तो प्रभु बीज बोने वाला उस दृष्टांत में ये विषय को नहीं बोलता. नाहीतर मग बीज पेरणीच्या दृष्टांतामध्ये प्रभूने हा दृष्टांत नसता सांगितला. वो ध्यान से सुनना. आणि लक्ष देऊन ऐका. आपको मालूम है, बीज बोने वाला बीज 4 जगह पर डालता है तो वही उसके बीच में आप लोगों ने देखा ना, खेती के बीच में भी चलने वाला एक छोटा सा रास्ता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, पायवाट. वो उसमें भी जाकर गिरता है. हाँ, पायवाट. ओके. आणि ज्या वेळेला शेतामध्ये बीजाची पेरणी केली जाते त्या वेळेला बीज जे आहे ते असं फेकलं जातं आणि मग ते बीज 4 ठिकाणी पडलं जातं आणि शेतामध्ये सुद्धा जाण्या येण्याकरता एक पायवाट राहते, त्याच्यावर सुद्धा ते पडतं. हाँ, तो आपको मालूम है, वो तो कुछ पक्षी उड़ा कर ले गया, आणि मग त्याच्यापैकी काही जे बीज आहे ते पक्षी उचलून घेऊन गेला कुछ पत्थर के ऊपर गिरा, आणि काही बीज जे आहे ते दगडावर पडलं कुछ झाड़ियों के ऊपर गिरा, आणि काही जे खुरटे गवत आहे त्याच्यावर पडलं और कुछ अच्छा जमीन में गिरा. आणि काही जे आहे ते चांगल्या जमिनीवर वहां पडलं. पर एक जगह पर प्रभु उड़ा कर खाने वाली एक बात है. आणि त्यापैकी एक ठिकाणी प्रभु प्रकर्षाने बोलणारी गोष्ट वो आहे. पूरा अभी आपको बात मालूम है, कई बार हमने ध्यान किया, लेकिन एक अच्छा फलदायक जीवन क्यों नहीं बिता पाया, उसके कारण मरकोस उसका 4 अध्याय उसका 18-19 वचन में प्रभु कहता है. मार्क त्याचा 4 अध्याय 18-19 वचन. जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना देखा, वचन सुना. और संसार की चिंता हाँ, देखा वचन सुना, लेकिन वो वचन उनमें काम नहीं आया. आणि त्यांनी वचन ऐकलं पण ते वचन त्यांच्या उपयोगात आलं नाही. कारण क्या है? त्याचं कारण काय उनके आहे? जीवन में संसार को इतना प्रभाव है आणि त्यांचं जीवन जगाच्या द्वारे प्रभावित आहे ना. संसार की बातों पर उनका दिल लगा हुआ है. आणि जगाच्या गोष्टीकडे त्यांचं मन लागलेलं आहे. सिर्फ संसार नहीं, आणि फक्त जगच नाही, और धन का धोखा धन की धोखा. आणि पैशाचा लोभ. देखा, ये संसार की बात और धन की धोखा, ये क्या कर दिया उसको? और अन्य वस्तुओं का लोभ हाँ, देखा, मतलब ये सब नाशवान बातों का लोभ, वो सब मिलाकर क्या किया? आणि उसमें समाकर हाँ. वचन को दबा देता है वजन को दबाता है, और वह निष्फल रह जाता है. निष्फल है. आज भी बहुत लोगों का आत्मीय जीवन एक निष्फल अवस्था बनने का एक मेन कारण ये संसार की अभिलाषा, धन की धोखा और अन्य दुनियादारी की बातें मिला करके उनका दिल को हमेशा उस कब्जा में रह करके सुनने वाला वचन फलना लाने वाला अनुभव में ले जाता है. आज पुष्कळ लोकांच्या जीवनाची अवस्था फलदायक का नाहीये त्याचं कारण मुख्य हेच आहे की त्यांच्या जीवनामध्ये जगाची अभिलाषा, धनाचा लोभ जे आहे ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे की त्यांच्या जीवनामध्ये प्रभूला स्थान राहिलेलं नाही. प्रियो, एक बात जानना, प्रियांनो, एक गोष्ट जाणा, आपका जीवन का सारा बात जानने वाला बात प्रभु आपके लिए सारे बात का प्रबंध करता है. आणि तुमच्या जीवनाची प्रत्येक गोष्ट जाणणारा प्रभू जे आहे ते तुमच्या जीवनाच्या सगळ्या गोष्टीच्या ज्या गरजा आहे त्याचा उपाय करून ठेवतो. आप प्रभु के वचन को मानना सीखो. आणि देवाचं वचन पालन करायला शिका. और जब पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 8 से 10 वचनों में, पहिलं तिमोथेला पत्र त्याचा 6 अध्याय 8 ते 10 वचनामध्ये, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो हाँ. तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए. देखा,
हमारे जीवन में कहाँ पर संतोष करना चाहिए। हाँ, आज के दिन में हमारे पास खाने पीने के लिए है, आणि आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला खायला प्यायला आहे. कल का बारे में, एक साल का बाद का बारे में चिंता करके धोखा मत खाना। आणि मग उद्याची काळजी करून फसल्या जाऊ नका. तेरा प्रभु ने दिया ना, पहले प्रभुने दिलंय ना, प्रभु ने आज के दिन के लिए नहीं, एक महीना पूरा दिया ना। आणि प्रभुने फक्त आजच्या दिवसाकरता नाही तर 1 महिन्याकरता पूर्ण दिलंय. कई लोगों को साल भर का दिया ना, काही लोकांना वर्षभराचं दिलंय, फिर भी वो लोग भग जाता है। आणि तरी ते लोक बहकतात. कितना दुखदायी बात है। किती दुःखदायक आहे. अभी आगे बढ़िए। पुढे वाचा. हाँ, पर जो धनी होना चाहते हैं हाँ, देखा उनका लक्ष्य क्या है। त्यांचा उद्देश काय आहे. उनको एक धनवान बनने का इच्छा उनके अंदर जागृत होता है। आणि एक श्रीमंत होण्याची इच्छा त्यांच्या मनामध्ये राहते. प्रियो, आप देखना, मतलब हमें आत्मिक बातों में धनवान होना अच्छी बात है, और तो दुनिया की धनवान की बातों पर जाएगा तो उनका दिल बहकता है, तो जरूर वो धोखे में फंसेगा, क्योंकि आगे भी प्रभु ने क्लियर लिखा है। आणि एक आपण आत्मिक श्रीमंत होणं याच्या करता आपला प्रयत्न राहिला पाहिजे. पण जगाच्या गोष्टीमध्ये जर श्रीमंत व्हायचा आपण प्रयत्न केला तर त्याच्या संबंधाने देवाच्या वचनामध्ये अशा प्रकारे लिहिलंय. आगे पर वे जो धनी होना चाहते हैं हाँ। वे ऐसी परीक्षा ऐसे परीक्षा, और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हाँ। और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं हाँ। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, हाँ। क्योंकि रुपये का लोभ हाँ। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, हाँ। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए हाँ। बहुतों ने विश्वास से भटककर हाँ। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखा प्रियो, कई लोग कई प्रकार का दुखों का चल्ली में है ना दुखी बनकर के रहने का मेन कारण उनके अंदर, देखो हमारे हृदय को परखने वाला जानने वाला प्रभु है, उनके अंदर का ये धन का लोभ है। आणि पुष्कळ लोक आपल्या जीवनामध्ये दुःखी, खेदी, नाराज का राहता, तर आपलं हृदय पारखणारा परमेश्वर या ठिकाणी स्पष्ट आपल्याला सांगतं की धनाचा लोभामुळे त्यांच्या जीवनामध्ये पुष्कळ प्रकारचं दुःख आणि कष्ट राहतं. दुनिया की धन की पीछे हमारा मन बहता है तो हम अपनी जिंदगी को बिगाड़ देता। आणि जगाच्या धनाच्या पाठीमागं आपलं मन राहतं तर आपलं जीवन व्यर्थ करतो. मैं 2 शब्द और इसका बारे में कितना भी लेक्चर देगा तो कम होता है। 2 वचन, खास वचन पढ़ करके आगे बढ़ेगा। आणि 2 विशेष वचन वाचून आपण पुढे जाऊया. नीति वचन उसका 23 अध्याय का 4-5 वचन। नीती सूत्र 23 अध्याय 4 आणि 5 वचन. धनी होने के लिए परिश्रम न करना, हाँ। अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, हाँ। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, हाँ। वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है. हाँ, देखा बोलने का मतलब क्या है प्रयोग, वो एक भयंकर धोखा आपको देगा, ये बात का सबूत है। आणि या ठिकाणी या गोष्टीचं प्रमाण आहे की ते तुम्हाला फसवेल. आपको ये वचन का बारे में बहुत व्याख्या करने का भी जरूरत है। आणि या वचना संबंधाने व्याख्या करण्याची काही जास्त गरज नाही. उसका 21 का 6 भी पड़ेगा। नीती सूत्र 21 अध्याय 6 वचन. जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो हाँ। वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, हाँ। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। हाँ, वो क्या ढूंढ रहा है? आणि ते उसको काय- लगता है कि मैं धन ढूंढ रहा है, धन को नहीं, मृत्यू को ढूंढ रहा है। आणि त्यांना असं वाटतं की आम्ही पैसे मिळवतोय, ते पैसे नाही तर ते मरण मिळवत आहे. प्रियो, ये दुनिया की बातों में जाकर कितने लोग इस स्थिति में बर्बाद हुए। आणि अशा गोष्टीमध्ये जाऊन कितीतरी लोकांचा नाश झाला. आज इस प्रकार का मर्डर कितना हम सुनता है। आणि अशा प्रकारे कितीतरी खून आपल्याला पाहायला जल्दी मिळतात. धनवान होने के लिए, आणि लवकर श्रीमंत होण्याकरता परंतु उनका जल्दी मृत्यू हो गया। आणि त्यांचं लवकर मरण आलं. प्रियो, इस छोटा सा जीवन में हमें सावधान रहना। आणि या छोट्याशा जीवनामध्ये आपण सावध राहायचं. एक सच्चा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ एक भक्त आणि खरं प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केलेला भक्त कभी भी उस आशा को धन के पीछे नहीं खोने देता। आणि कधीही त्या आशेला नष्ट होऊ देत नाही त्या धनामुळे. प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह है। प्रियांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो आपली आशा प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. हमारा धन प्रभु यीशु मसीह है, आणि आपलं धन प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपना धन बन गया। आणि ज्याच्या करता प्रभू येशू ख्रिस्त आपला धन झाला. प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन आशा है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपली जिवंत आशा आहेत. उसके जीवन में कैसा भी लूट आएगा तो भी वो आनंद से सहेगा। आणि त्याच्या जीवनामध्ये कितीही नष्ट आले तरी सुद्धा ते आनंदाने सहन करेल. एक सच्चा भक्त जिसको जीवित आशा प्रभु यीशु मसीह मिल गया, वो दुनिया की कोई भी कष्ट नष्ट जो भी बात है वो सहने के लिए तैयार रहेगा.
आणि मग एका व्यक्तीच्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त आला तर मग त्याच्या जीवनामध्ये कितीही कष्ट नष्ट आले तरी तो ते आनंदाने सहन करेल. ये है सच्चा भक्त का अनुभव. आणि हे आहे खऱ्या भक्ताचा अनुभव. ना इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 34 से 39 तक का वजन बहुत ध्यान से सुनना. एक्चुअली वो एक छोटा छोटा वजन को लेकर के पूरा दिन प्रचार कर सकता है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बोल करके जा रहा हूं क्योंकि आपको समझने के लिए प्रभु ने इतना लायक बनाया ये मुझे मालूम. इसलिए ध्यान से पढ़ने के समय में ध्यान से सुनना. आप कभी बाइबल में है कि नहीं, ऐसा ही पढ़ रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान देना. प्रभु आपको सहायता करे. इब्रिकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय 34 ते 39 वचन. क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है. इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा. पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा. पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए. ये इस पे अपने आप को परखना प्रियो. याच्यामध्ये आपण स्वतःला पारखा प्रियांनो. ये वचन पढ़ने के समय में कितने लोगों को झटका लगा. आणि हे वचन ऐकल्यानंतर किती लोकांना झटका बसला. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ. आणि एक गोष्ट मी सांगू इच्छितो. आप प्रभु की उपस्थिति में है आणि तुम्ही प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये और आहात. ये वचन सुनने के समय में भी प्रभु हमको परख रहा है. आणि हे वचन ऐकत असताना सुद्धा प्रभू आपल्याला पारखत आहे. प्रियो भक्त लोग प्रभु के लिए है ना अपना सारा संपत्ति लूटने के लिए भी दिया. आणि भक्ताने आपली संपूर्ण संपत्ती लुटण्याकरता सुद्धा दिली. मैं आपको कई बार बताया ना, आणि पुष्कळ वेळा मी सांगितलं ना. है ना नीरो राजा के समय में आणि नीरो राजाच्या है वेळामध्ये ना प्रभु का लोगों को इतना सतावट पड़ा. आणि प्रभूच्या लोकांना एवढा त्रास झाला. है ना लोग एक यीशु मसीह में विश्वास करने वाला है कि नहीं ये परखने के लिए उस समय के लोग क्या करता था. आणि त्या काळामध्ये एक व्यक्ती प्रभू मध्ये आहे का नाही हे पारखण्याकरता काय करायचे. आपको मालूम है उस समय में नीरो ने एक ऑर्डर निकला है. आणि त्यावेळेला नीरोने एक हुकूम काढला होता. क्या मालूम है, तो काय, अगर आप एक मसीह व्यक्ति को पकड़ कर देगा आणि तुम्ही जर एका ख्रिस्ती व्यक्तीला पकडून दिलं तर वो व्यक्ति को उस व्यक्ति का पूरा धन दौलत मिलेगा. आणि मग त्या व्यक्तीला त्या व्यक्तीचं सगळी धन संपत्ती भेटेल. अब आप बताओ ऐसे समय में सुसमाचार सुनाना आसानी है क्या. आणि मग अशा वेळेला सुवार्ता सांगणं सोपं आहे का. कितने लोग समझा. आमेन. ऐसा समय में सुसमाचार सुनाने के लिए कितना दिक्कत है. आणि अशा वेळेला सुवार्ता सांगण्याकरता किती मोठा त्रास आहे. अगर आप सोचो अगर आपने किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया आणि तुम्ही विचार करा, तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला सुवार्ता जर सांगितली वो व्यक्ति क्या करेगा. तो व्यक्ती त्याला काय करेल. सीधा जाकर के नीरो को बोलेगा प्रभु नीरो ये व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है. आणि मग तो व्यक्ती जाऊन सरळ नीरोला सांगेल की हे राजा हा व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास तो करतो. उसको क्लियर करने के लिए नीरो क्या करेगा. आणि मग त्याला स्पष्ट करण्याकरता नीरो काय करेल. ऐसे कोई बोल दिया बोल करके एकदम उसको मारेगा नहीं. आणि कोणी असं सांगितलं म्हणून त्याला लगेच मारणार नाही. तो ये नीरो राजा के सामने आणि नीरो राजासमोर एक सिपाही आकर के उसको पूछेगा. आणि एक शिपाई येऊन त्याला विचारेल. क्या बोलना मालूम है. आणि काय है हमारा नीरो तुरंत ये बोलना चाहिए हमारा प्रभु है. आणि मग तो शिपाई म्हणेल आमचा नीरो, तर मग या व्यक्तीने म्हणायला पाहिजे की माझा प्रभू आहे. और अगर ऐसे नहीं बोला आणि तो जर असं नाही बोलला नहीं मेरा प्रभु यीशु मसीह है आणि माझा प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, तो फिर वो व्यक्ति को जिसको ये बताया उसको उसका पूरा संपत्ति मिलेगा. आणि मग ज्याने कोणी सांगितलं की हा ख्रिस्ती आहे तर मग त्याला या ख्रिस्ती व्यक्तीची सगळी धन संपत्ती भेटेल. और ये व्यक्ति को क्या करेगा. आणि मग त्या ख्रिस्ती व्यक्ती विश्वासूला काय कराल. नीरो को दिल में जैसे आया वैसा उसको मार देगा. आणि नीरोच्या मनामध्ये जसेल तसं त्याला मारून टाकेल. कपड़ा बांध करके उसमें तेल डाल करके उस पर आग लगाएगा. आणि त्याच्या शरीराला कपडे बांधतील, वरतून ते तेल टाकेल आणि त्याला जाळून नहीं टाकेल. तो जिंदा मिट्टी में गाड़ देगा. आणि नाही तर जिवंत मातीमध्ये गाडून नहीं टाकेल. तो शहर के गुफा में डाल देगा. आणि नाही तर सिंहाच्या त्या मादेमध्ये टाकून नहीं देतील. तो उबला हुआ तेल में डाल देगा. आणि नाही तर उकळत्या तेलात टाकून देतील. नहीं तो भूसा में कड़ा करके उसको आग लगा करके धीरे धीरे मारेगा. आणि नाहीतर मग भुसामध्ये त्याला उभं करतील आणि त्याला आग लावून हळू त्याला मारतील. रियो उस समय का सतावट के बारे में मेरे पास है, अरे तो मलयालम में है, वो कई लोगों को लिखा हुआ वो चरित्र है. मैं आपको बताता हूँ, जब भी वो मैं पढ़ता हूँ
में कभी बिना रोते हुए वो पढ़ाई पूरा नहीं करता. आणि मग पहिल्या शताब्दीमध्ये झालेल्या नीरो राजाच्या द्वारे छळ आहे ते एक पुस्तक माझ्याकडे पण ते मल्याळम मध्ये आहे. मी ज्या वेळेला ते वाचतो ते रडल्याशिवाय ते राहत नाही. बहुत भयंकर बात. खूप भयंकर गोष्ट आहे. हम लोगों ने कष्ट को कुछ भी देखा ही नहीं. आणि कष्ट आपण काही पाहिला नाही हम कष्ट को कुछ और समझता है. आणि कष्टाला आपण वेगळं काही समजतो. परंतु पहला शताब्दी 1-2 शताब्दी में मानो करीब 200 साल के ऊपर इतना सतावट पड़ा है. आणि 200 वर्ष एवढाच ख्रिस्ती लोकांचा छळ झालाय. क्योंकि करीब 224 में जब कॉन्स्टेंटिन राजा मसीह धर्म को अपनाया तब तक बहुत सतावट था. आणि इसवी सन 224 पर्यंत ज्या वेळेला कॉन्स्टंटिन राजाने ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केला तोपर्यंत ख्रिस्ती लोकांचा छळ खूप होत होता. उसका उद्धार नहीं हुआ. आणि त्याचं तारण नाही झालं. परंतु उन्होंने मसीह धर्म अपनाया. आणि त्याने ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार इसका केला. बड़ा चरित्र है, मैं अभी उसमें नहीं जाएगा. आणि त्याचा इतिहासामध्ये आता नाही जात. तो एक बात आपको जानना, आणि एक गोष्ट जाणा, उस समय में मसीह लोग बहुत प्रकार बहुत भयानक रीति में सताया गया. आणि त्या वेळेला ख्रिस्ती लोक भयंकर रीतीने त्यांचा छळ व्हायचा. वचन कहता है वचन सांगतं कभी भी उन लोग कभी भी पीछे नहीं गया. आणि तरीही ते लोक मागे गेले नाही वो आगे बढ़ा, आणि ते पुढे गेले उनके लिए मरने के लिए तैयार हुआ. आणि ते प्रभू करता मरायला तयार झाले. क्यों? का? क्योंकि उन्हें आशा है आणि त्यांना आशा आहे. मैं आज मर गया तो मैं प्रभु के साथ मिलेगा. आणि आज जर मी मेलो तो प्रभू सोबत भेटे. प्रियो, आज हमारा आशा कहाँ मरे आज आपली आशा कुठे है ना? प्रभु में हमारा आशा है क्या? प्रभू मध्ये आपली आशा आहे का? है ना? अगर फर्क आएगा तो हमारे में प्रभु में आशा है वो बात सबूत होंगे. आणि मग ज्या वेळेला परीक्षण होईल त्या वेळेला आपली आशा प्रभू मध्ये आहे हे आपल्याला दाखवता येईल का? अब देखो, अगर आपको प्रभु में आशा है हो सकता है आपका नौकरी जाने वाला बात आएगा. आणि प्रभू मध्ये जर आशा आहे तर कदाचित होऊ शकतं तुमची नोकरी जाईल. आने वाले दिनों में ऐसे कई बात परीक्षा हो सकता है, इसलिए अभी आपको सिखाया नहीं, ऐसा नहीं बोलना. आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये अशा प्रकारची परीक्षा येऊ शकते म्हणून तुम्हाला ही गोष्ट शिकवली नाही असं नका म्हणू. क्योंकि आजकल ऐसे कुछ प्लान बनाया जा रहा है. आणि अशा प्रकारच्या योजना काही बनवल्या जात आहेत. तगड़ा कुछ परीक्षा होने वाला है. आणि मोठी काही परीक्षा येणार आहे. मुफ्त में ये जीवन पार हो जाएगा ऐसा मत सोचना. आणि फुकट हे जीवन पार होऊन जाईल असा विचार करू नका. Praise the Lord. प्रियो, कहीं से भी परीक्षा आएगा तो भी आणि कशी परीक्षा आली तरी हमें प्रभु को कभी इनकारना नहीं है. आपण प्रभूला कधी नाकारायचं नाही. है ना? प्रभु में बना रहना, आणि प्रभू मध्ये स्थिर प्रभु राहायचं. में हमारा भरोसा को हमें प्रकट करके जीवन बिताना. आणि आपण आपला भरोसा प्रभू मध्ये प्रकट करून जीवन जगायचं आहे. पहला पत्रोस पहला अध्याय 21 वचन में पढ़ता है, पहिले पेत्र पहिला अध्याय 21 वचनामध्ये आपण पाहतो. सच में हमारा आशा किसमें है? आणि खरोखर आपली आशा कशामध्ये आहे? प्रभु का दास कहता है आणि प्रभूचा दास म्हणतो प्रभु में आशा रहे. आणि प्रभू मध्ये आशा ठेवा. क्या बोलता है? आणि काय म्हटलंय? हाँ, उसके द्वारा हाँ. तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो हाँ. जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया हाँ. और महिमा दी. हाँ. तुम्हारा विश्वास और आशा हाँ. परमेश्वर पर हो. तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो. आणि तुमचा विश्वास आणि तुमची आशा देवावर असू द्या. हाँ ब्रो ना? कोणावर? प्रभु में हमारे विश्वास और आशा बना. आणि प्रभू मध्ये आपला विश्वास आणि आशा राहिला पाहिजे. देखिए, हमारे जीवन में हमें खिन्न करने वाला, हमें तोड़ने वाला, हमारा दिल तोड़ने वाला, हमारे जीवन को भड़काने वाला, निकालने वाला ऐसा बात आ सकता है. आणि आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला खिन्न करणारा, उदास करणारा, आपल्याला फाडून खाणारा असा वेळ येऊ शकते. अब हमें अपने आप को क्या करना मालूम? आणि त्यावेळेला आपण स्वतःला काय करायचंय माहितीये का? मैं एक सुंदर बात आपको बताऊं. सुंदर गोष्ट मी सांगतो. हम अपने आप को क्या बोलना? आपण स्वतःला काय म्हणायचं? देखो, कोरह पुत्र लोगों ने वो बात 3 बार कहता है. आणि कोरपुत्र ती गोष्ट 3 वेळा म्हणतो. सब पवित्र लोगों का ध्यान में आना होगा. आणि सगळ्या पवित्र भक्ताच्या त्या गोष्टी माहिती आहे. क्योंकि आत्मीय जीवन में हम बहुत संकट में पड़ते हैं. आणि आत्मिक जीवनामध्ये संकटामध्ये आपण अब पडतो. हमें शायद कोई आलोचना देने वाला भी नहीं मिलेगा. आणि त्यावेळेला आपल्याला वाणी देणारा कोणी भेटणार लेकिन नाही. ये वचन आपको याद रखना. आणि ही गोष्ट हे वचन तुमच्या लक्षात राहू द्या. बहुत संकट में गुजरने के समय में कोरह के पुत्र लोगों ने स्वयं क्या किया? आणि खूप संकटामध्ये जात असताना कोरपुत्रांनी काय केलं? अपने आप से क्या कहा? आपल्या स्वतःला काय म्हटलं? मेरे लिए आपके लिए वो बहुत मार्गदर्शन है. आणि तुमच्या आणि माझ्या करता खूप चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन मेरा आहे. भजन संगीता 42 का 5 पढ़ना. आणि स्तोत्र 42 त्याचं 5 वचन हे वाचा. प्राण, हे मेरी प्राण. देखो, वो लोग अपने आप को बोल रहे हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तुम क्यों गिराया जाता? देखो, ये ऐसे अनुभव में कई लोग हैं. आणि अशा आपके लिए अनुभव- संदेश है, खास संदेश वायदा है. आणि आज अशा प्रकारच्या अनुभवामध्ये जे लोक आहेत त्यांच्याकरता हा प्रभूचा खास असा संदेश आहे. तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, हाँ, क्योंकि
क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर हाँ। फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, कितना बड़ी बात है प्रियो। आमेन। Praise the Lord. है? देखो और पुत्र लोग, हम लोग जो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दुखदायी अनुभव में चला गया, तब उनका दिल इतना व्याकुल हो गया, दिल टूट गया, है? जीना मुश्किल हो गया, तब वो अपने आप से कहता है। आणि मग ज्या वेळेला लोक कल्पनाही नाही करत अशा प्रकारच्या भयंकर अवस्थेमध्ये गेले आणि एकदम ते खचून गेले आणि त्या अवस्थेमध्ये राहत असताना या ठिकाणी कोरव पुत्र अशा प्रकारे म्हणत आहे। और वो एक वचन पढ़ना, वो ये भजन संगीता 11 वचन, उसका बाय 42 का 11 वचन। हे मेरे प्राण, हाँ। तू क्यों गिरा जाता है? हाँ। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हाँ। परमेश्वर पर भरोसा रख, हाँ। क्योंकि वह मेरे मुंह की चमक। हाँ, मेरे मुंह की चमक कौन है? प्रभु है। आमेन। ओ प्रभु यीशु, आप देखो, आप नीचे नहीं ऊपर, उस उन्हीं की ओर देखो, Praise the Lord. आमेन। कौन हमारे लिए इस प्रकार विरूप बना आणि तुम्ही वधस्तंभाकडे बघा की कोण माझ्याकरता अशा प्रकारे बलिदान झाला है, जिन्होंने पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, दुनिया के ऊपर, मृत्यु के ऊपर सब बात में विजय पाए, वो प्रभु की ओर देखो। आणि ज्याने पापावर सैतानावर सर्व गोष्टीवर विजय प्राप्त झालेला त्या प्रभुकडे पहा। धन्यवाद। Praise the Lord। तीसरा बार उसका 43 का 5 में वो कहता है, आणि 43 स्तोत्र 43 त्याच्या 5 वचनामध्ये कोरव पुत्र अशा प्रकारे हे म्हणतात। मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हाँ। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हाँ। परमेश्वर पर भरोसा रख, हाँ, क्योंकि वह मेरे मुंह की चमक हाँ। और मेरा परमेश्वर है। हाँ। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद करो ना। आणि तुम्ही धन्यवाद करा प्रियो, आप दुखी होकर के धन्यवाद देना मत छोड़ना। आणि दुःखी होऊन धन्यवाद द्यायला सोडू नका। Praise the Lord। आमेन। प्रियो, प्रभु जाने बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। प्रियानो, प्रभु न जाणता आपल्या जीवनामध्ये काही होत नाही और पूर्ण में प्रभु में भरोसा रखो, आणि संपूर्णरित्या तुम्ही प्रभूवर भरोसा ठेवा उसकी ओर देखना ही हमारे चेहरे का चमक है। आणि त्याच्याकडे पाहणंच आपल्या चेहऱ्यावरची चमक आहे। कितना धन्यवाद है प्रियो। किती धन्य गोष्ट आहे। मेरा दावीद भी बहुत क्लेश में गुजरा वो आणि व्यक्ति है। दावीद सुद्धा खूप क्लेशामध्ये गेलेला व्यक्ती आहे। लेकिन वो क्या बोलता मालूम है? तो काय म्हणतोय माहिती का? देखो, भक्त लोगों के जीवन में बधाई हुआ शब्द हमारे लिए भी एक प्रोत्साहन है प्रियो। आणि जे भक्त आहे त्यांच्या जीवनाचा जो अनुभव आहे ते आपल्याकरता सुद्धा प्रोत्साहन आहे। 71 का 5-6 वचन पढ़ता। आणि स्तोत्र 71 त्याचं 5-6 वचन। हाँ, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, हाँ। मैं तेरे ही पास जोता आया हूँ। हाँ। बचपन से मेरा आधार तू है। हाँ। मैं घर से निकलते ही हाँ। तेरे द्वारा संभाला गया। हाँ। मुझे माँ के कोख से तूने ही निकाला। हाँ। इसलिए मैं नित्य तेरी इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता करूंगा। आमेन। Praise the Lord। मानो प्रभु का दास का हमेशा प्रभु आशा है, प्रभु को स्तुति करते हुए, प्रभु का महिमा करते हुए, प्रभु में मगन रहते हुए जीना, ये दावीद ने सिखाया। आणि मग त्याच्या जीवनामध्ये कितीही प्रकारचे दुःख आले तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये राहत असताना सुद्धा प्रभूच्या नावाचा गौरव करणं, त्याच्यामध्ये आनंदित राहणं, त्याचं स्तुतिगान गाणं, हेच प्रभूचा दास करत होता। दावीद का ये 25 अध्याय का उसका 21 वचन उसका बी पाठ थोड़ा पढ़ना। स्तोत्र 25 त्याचा 21 वचनाचा शेवटला भाग। भलाई और सीधाई हाँ, मुझे सुरक्षित रखे, हाँ। क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। देखा, मानो मुझे तेरे ही आशा है। आणि माझी आशा फक्त तू आहे। Praise the Lord। Praise the Lord। प्रियो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। आणि एक गोष्ट मी सांगू इच्छितो, आज हमारा आशा, हमारा कोई नौकरी नहीं, आपली आशा आपली नोकरी नाही हमारा कोई धन दौलत नहीं, आणि आपली धन संपत्ती नाही हमारा कोई ज्ञान बुद्धि या ऐसा कोई दुनियादारी की बात नहीं। आणि आपलं ज्ञान या आपल्या जगाची प्रौढी वैभव नाहीये। हमारा आशा क्या है? आणि आपली आशा काय आहे? कितने लोग बोल सकता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा आशा है? आमेन। Praise the Lord। प्रियो, ऐसा लोगों के बारे में वही दावीद 146 का 5 में कहता है। आणि स्तोत्र 146 त्याच्या 5 वचनामध्ये दावीद अशा प्रकारे म्हणतो, ताई धन्य है वह क्या धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है हाँ। और जिसका भरोसा जिसका भरोसा, अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हाँ देखा, जिसकी भरोसा उस प्रभु में है वो धन्य व्यक्ति है। आणि ज्याची आशा त्या प्रभूवर आहे तो धन्य आहे। प्रियो, एक बात जानना, प्रेरणो एक गोष्ट जाणा, हमारा हर बात में हमारा प्रभु मेरे लिए सब कुछ है,
ये बात का गवाही देने के लिए हम हर पल तैयार रहना चाहिए। आणि माझ्या जीवनामध्ये लागणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची आशा जी आहे तो माझा प्रभू आहे, अशा प्रकारे साक्ष द्यायला आपल्याला आलं पाहिजे. मेरा प्रभु के द्वारा मैं हर बात में पार करूंगा। आणि माझ्या प्रभूच्या द्वारे प्रत्येक संकटाला मी पार करून जाईल. आपके दिल में ऐसा एक सच्चा निर्णय है तो आणि तुमच्या मनामध्ये अशा प्रकारचा एक निर्णय आहे तर, स्वर्ग आप में आनंद दे, आणि स्वर्ग तुमच्यामध्ये आनंदी आहे, स्वर्ग आप में प्रसन्न है। आणि स्वर्ग तुमच्यामध्ये प्रसन्न है आहे. ना, जब 147 का 11 पढ़ना वो ये सब सोनादार वजन है प्रिय। स्तोत्र 147 त्याचं 11 वचन वाचा. हाँ। वो अपने डरवैयों से हाँ। प्रसन्न होता है, हाँ। अर्थात उनसे हाँ। जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। देखा, उस पर आशा लगाए रहता है, प्रभु उस पर प्रसन्न रहता। आणि जो कोणी आपली आशा प्रभूवर ठेवतो त्याच्यावर प्रभू प्रसन्न राहतो. Praise the Lord. Praise the Lord. कितना धन्यवाद है प्रिय। आणि किती धन्य गोष्ट आहे. आपको मालूम है कि प्रभु का मानो प्रभु में जो आशा प्राप्त करने वाला बात आज हमारे लिए बोलेगा तो प्रभु का वचन है। आणि प्रभूमध्ये आशा प्राप्त करणारी गोष्ट म्हणजे आता प्रभूचं वचन आहे. जिसको इस आशा में मजबूत होना है, आणि ज्याला त्या आशामध्ये स्थिर दृढ राहायचंय, उसको ये वचन को ज्यादा सा प्राप्त करने का मतलब आग्रह इच्छा होना चाहिए। आणि त्याला जास्तीत जास्त देवाचं वचन प्राप्त करण्याची इच्छा राहते. आज कितने लोगों को ये वचन में प्रभु मतलब प्रभु में आशा रखने का कारण बन जाता है। आणि आज किती लोकांना देवाच्या वचनामध्ये आशा ठेवण्याचं कारण राहतं. Praise the Lord. प्रभु के वचन जो भी मतलब बताता है उसमें आपको आशा है क्या? आणि प्रभूचं वचन आपल्याला जे काय सांगतात त्याच्यामध्ये आपली आशा आहे का? प्रियो, मैं आपको बताया ना, आज प्रभु जो भी वचन देगा, वायदा देगा, ये वचन के द्वारा देगा, आणि प्रभू आपल्याला जे काय अभिवचन देईल त्याच्या वचनाच्या द्वारे देईल. है ना। ये जो आशा हमें ये वचन के द्वारा मिलेगा, आणि आपल्याला प्रभूची आशा त्याच्या वचनाच्या द्वारे भेटेल. इसलिए भक्त लोग वचन पर आशा रखता है। आणि म्हणून भक्त लोक देवाच्या वचनावर आशा राहते. जब 119 का 74 वचन में, आणि स्तोत्र 119 त्याच्या 74 वचनामध्ये, हाँ, मेरे डरवैये हाँ, मुझे देखकर आनंदित होंगे, हाँ। क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। देखा, मैंने तेरी वचन पर आशा लगाई है। आणि मी माझी आशा तुझ्या वचनावर लावली आहे. प्रियो, प्रभु का भक्तों को प्रभु के वचन में आशा है। आणि प्रभूच्या लोकांना प्रभूच्या वचनावर आशा आहे. है ना, उसका 114 का उसका भी पाठ पढ़ना। आणि स्तोत्र 119 त्याच्या 114 वचनाचा शेवटला भाग. मेरी आशा तेरे वचन पर है। हाँ, क्या बात है प्रियो। हम लोग ये वचन पढ़ने के समय में हमें भी पूछना, प्रभु का दास दावीद की आशा प्रभु के वचन पर है, तो मेरी आशा कहाँ पर है? आणि प्रभूचा दास दावीद याची आशा जर प्रभूच्या वचनाकडे, तर माझी आशा कुठे? है ना, उसका 116 पढ़ना। त्याचं 116 वचन वाचा. हे यहोवा, हाँ, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, हाँ। कि मैं जीवित रहूं, हाँ। और मेरी आशा को न तोड़। ओ देखा, मैं क्योंकि मैं तेरे वचन पर आशा रखता है, आणि तुझ्या वचनावर मी आशा ठेवतो, मैं तुझे पर आशा रखता है, आणि मी तुझ्यावर आशा ठेवतो, इसलिए मेरी आशा टूटने नहीं देना। आणि म्हणून माझी आशा तुटू देऊ है ना, नको. उसका 147 पढ़ना। आणि त्याचं 147 वचन वाचा. मेरी आशा तेरे वचनों पर थी. देखा, मेरी आशा तेरी वचनों पर थी। आणि माझी आशा तुझ्या वचनावर होती. प्रियो, जो भी प्रभु का वचन हमें प्रभु दिया जाता है, आणि प्रभूचं वचन आपल्याला जे काय मिळतं, आप उस वचन को थामा रहना। आणि त्या वचनावर मध्ये स्थिर राहा. जो व्यक्ति प्रभु का वचन जान करके उस पर विश्वास करेगा, प्रभु उस पर जरूर कार्य करेगा। आणि जो कोणी देवाचं वचन जाणून त्याच्यावर विश्वास करेल, ते वचन त्याच्या जीवनामध्ये कार्य करेल. एक बात आपको बताता हूँ, एक गोष्ट सांगतो. आज भी ये वचन सुनने के समय में प्रभु ये वचन तूने मेरे लिए दिया बोल के आप एक बार धन्यवाद करके देखो ना। आणि हे वचन प्रभू तू मला दिलं म्हणून तुला धन्यवाद, असा तुम्ही धन्यवाद करून बघा ना, आपका जीवन बदलेगा। तुमचं जीवन बदलेल. क्योंकि वो वचन आप मन में जो वचन हमारे पास आता है, प्रभू आज संबंध करने का मार्ग हे वचन है। आणि प्रभू आज तुमच्याशी कुठल्या प्रकारचा संपर्क करतो, त्याच्या करता असणारा दुवा हे त्याचं वचन आहे. कोई मेरा दिल में जो भी बात मैं अगर मेरे भाई को जो बताता है तो मैं वचन के द्वारा बताता है। आणि माझ्या मनामध्ये जे काय आहे ते मी माझ्या भावाला सांगतो, तर ते मी वचनाच्या द्वारे सांगतो. तब उनको समझ में आता, आणि त्यावेळेला त्यांना समजतं, तब वो काम पूरा हो जाता। आणि मग ते काम पूर्ण होतं. आज प्रभु ने हमारे लिए अपना दिल खोल दिया है वचन के द्वारा। आणि आज प्रभूने आपलं हृदय उघडलंय ते वचनाच्या द्वारे. ये वचन पर हमें क्या करना चाहिए? आणि या वचनावर आपण काय करायला पाहिजे? विश्वास करना। विश्वास करायचा. विश्वास करेगा तो क्या होगा? विश्वास कराल तर काय होईल? देखो, ये दो वचन आप लोग दिल से कभी जाने नहीं देना। ये पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन। पहिलं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय 13 वचन. इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं, क्यों
विश्वास करेगा तो मैं आपको बोलता हूँ वो दुनिया की आखिरी तक ये वचन जो विश्वास करेगा वो वचन का सामर्थ्य उसका जीवन में दिखने के लिए आएगा. आणि मग हे येणारं वचन हे प्रभूचं आहे. असं जो कोणी त्याच्यावर विश्वास करेल ते वचन त्याच्या जीवनाकरता प्रभावशाली कार्य राहील. जोपर्यंत तो विश्वास ठेवेल तोपर्यंत ते वचन त्याच्या करता प्रभावशालीच राहील. क्योंकि स्वर्ग ये देखता है. कारण स्वर्ग हे पाहतो. मैं आपको बोलता ना जो भी व्यक्ति प्रभु ये वचन मेरे लिए दिया मैं ये वचन विश्वास करता हूँ मैं ये बात को मान लेता हूँ ऐसा बोल कर देखो वो वचन आपका जीवन में पूरा हो जाएगा. आणि मग जो कोणी व्यक्ती असं म्हणतो की या वचनावर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याच्या अनुसार चालतो निश्चितच ते वचन त्याच्या करता कार्यकारी राहील. कई लोग ऐसे बातों पर मैंने इतना विश्वास करता ही नहीं इसलिए कुछ काम नहीं होता. आणि काही लोक देवाच्या वचनावर विश्वास करत नाही म्हणून तेव्हा कार्य त्यांच्या जीवनात होत नाही. जब यीशु मसीह दुनिया में रहने के समय में भी अविश्वासियों के बीच में प्रभु बड़ा बड़ा काम नहीं किया क्योंकि उनका अविश्वास देख करके प्रभु बड़े बड़े काम नहीं कर पाए. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जगामध्ये राहत असताना सुद्धा काही ठिकाणी मोठे मोठे काम नाही केलं. कारण का की त्यांचा अविश्वासामुळे प्रभूने काम नाही केलं. प्रभु विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में काम करता आणि विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांच्या जीवनामध्ये प्रभू काम करतो. विश्वास उसका आधार है. आणि विश्वास त्यांचा आधार आहे. है ना. जब यिर्मयाह 1:12 भी आप कभी भूलना नहीं. आणि यिर्मयाह पहिला अध्याय 12 वचन तुम्ही विसरू नका. ये सब सोनादार वचन है प्रियो. आणि हे सोनादार वचन आहे प्रियांनो. तब यूहन्ना ने मुझसे कहा हाँ। मुझे ठीक दिखाई पड़ता है हाँ। क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ. देखा मैं अपना वचन को पूरा करने के लिए प्रभु कभी सोता नहीं प्रियो. प्रभु अभी यहाँ पर नहीं सोया रहे. प्रभु एकदम देख रहे हैं ये वचन जो आता है कितने लोग दिल से ये वचन को अपना जीवन में लाने के लिए विश्वास के साथ तैयार है. आणि प्रभू कधी झोपत नाहीये. प्रभू असं म्हणतो मी माझं वचन पूर्ण करण्यामध्ये जागृत आहे. आणि प्रभू हे पाहत राहतो की या ठिकाणी येणारं जे वचन आहे ते किती लोक विश्वास योग्यतेने त्याचा स्वीकार करत आहे. मेरी एक बात हो यार एक पापी को उद्धार पाने के लिए क्या दिक्कत है. आणि एका पापी व्यक्तीला तारण प्राप्त करण्याकरता काय अडचण आहे. आपने ये वचन सुना. आणि तुम्ही हे वचन ऐकलं. प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पापी लोकांचं तारण करण्याकरता आला. आप ये बात सुना. आणि तुम्ही हे ऐकलं. आपने विश्वास किया. तुम्ही विश्वास केला. हाँ बोलता है तुम्ही म्हणता प्रभु यीशु हे प्रभू येशू मैं पापी हूँ. मी पापी आहे. आप मुझे उद्धार करने के लिए आया. आणि तू माझं तारण करण्याकरता मैं आला. विश्वास करता हूँ. मी विश्वास करतो. मेरे पापों को कबूल करता हूँ. आणि मी माझी पापे कबूल आप करतो. मेरे दिल में आइए. आणि तू माझ्या हृदयामध्ये आहे. इतना बोल कर देखो. आणि एवढं बोलून बघा. इतना बोल कर देखो. एवढं बोलून बघा. वो वचन आपका जीवन में पूरा हो जाता है. आणि हे वचन तुमच्या जीवनामध्ये पूर्ण होतं. आपका पाप क्षमा का अनुभव मिलता है. मला पाप क्षमेचा अनुभव मिळतो. आप एक प्रभु का बेटा बेटी बन जाता. आणि तुम्ही प्रभूचा मुलगा आणि मुलगी होता. आप जीवित आशा में उमड़ने लगता. आणि जिवंत आशामध्ये तुम्हाला उकळ्या फुटता. आपका जीवन में पूर्ण रूप में आपका लक्ष्य मिलता कि आज आप मर गया तो स्वर्ग जाएगा. आणि तुमच्या जीवनामध्ये एक आशा राहते की आज जर मी मेलो तो स्वर्गात जाईल. आपने क्या किया. तुम्ही काय केलं. कुछ किया क्या. काय केलं का. नहीं है ना. आपके लिए जो भी करना प्रभु ने किया वो सच्चाई पर आपने सिर्फ विश्वास किया. आणि तुमच्याकरता जे करायला पाहिजे होतं ते प्रभूने केलं. तुम्ही त्या सत्यावर विश्वास ठेवला. फिर भी अभी तक अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तो अजूनही तुमचं तारण झालेलं नाही तर किसका गलती है भाई. मग चूक कुणाची आहे. रोज आकर वचन सुनेगा आणि दररोज येऊन वचन ऐकतील पर तू विश्वास नहीं कर. आणि विश्वास नाही करत. इसका कोई फायदा नहीं होता. त्याचा काही फायदा नाही हो. आज लोग प्रभु का वचन जान करके उसमें विश्वास ना करने के कारण प्रभु जो काम करने के लिए तैयार है उसको काम करने के लिए मना करता है. आणि प्रभूचं वचन ऐकून त्याच्यावर विश्वास न ठेवल्या कारणाने ते वचनाच्या द्वारे प्रभू जे काही कार्य करू इच्छितो ते तो नाही करत. प्रभु बोलता है मेरा वचन मेरा मुंह से निकला वो काम करने के लिए मैं जागृत हूँ. आणि प्रभू म्हणतो की माझ्या मुखातून निघालेल्या वचनाच्या अनुसार कार्य करायला मी जागृत आहे. प्रियो जब आपको मालूम है एशिया में ऐसे एक शब्द है एशिया 55 का 11 वचन. यशया त्याचा 55 अध्याय त्याचा 11 वचन. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा हाँ. जो मेरे मुख से निकलता है. देखा प्रियो ये वचन कहाँ से निकलता. प्रभु के मुंह से निकलता. ये टोबी के मुंह से नहीं निकलता. ये वचन प्रभु का मुंह से निकला हुआ क्योंकि अभी मेरा मुंह प्रभु ने लिया हुआ है. प्रभु मेरे द्वारा बात करेगा. ये प्रभु का वचन है. ये प्रभु का वचन जान करके ये ग्रहण करने वालों को फायदा मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि प्रभु बोलता है मैं आज इस 2022 साल की दिसंबर महीना 18 तारीख को मेरे दास के द्वारा मैंने मेरी मुंह से बात किया.
आणि या ठिकाणी प्रभू जे काय बोलतो ते त्याच्या मुखाने बोलतो आणि आज जे बोलत आहे ते प्रभू माझ्या मुखातून बोलत आहे आणि आज प्रभू म्हणत आहे की 18 डिसेंबर 2022 ला या ठिकाणी मी घोषणा करत आहे प्रभु यिर्मयाह को बोला तू मेरा मुंह बंद कर रहा आणि यिर्मयाहला प्रभू असं म्हटलं तू माझं मुख हो बोलने का अर्थ सांगायचं मैं तात्पर्य तेरी द्वारा जो भी बोलेगा मैं बोलता हूँ सब मुंह मतलब तेरा पर जो मेरा है आणि मला जे काय बोलायचंय मी तुझ्या मुखाच्या द्वारे बोलेल तू बोलशील पण तुझं मुख तू मला दे प्रेज लॉर्ड समझ में आया लक्षात आलं प्रभु का अभी वो वचन पढ़ो वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा देखो पूरा पढ़ लो उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा हाँ। जो मेरे मुख से निकलता है हाँ। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा हाँ। परंतु जो मेरी इच्छा है हाँ। उसे वह पूरी करेगा उसे वो पूरी करेगा जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है हाँ। उसे वह सफल करेगा देखा सबर करेगा किसके लिए आणि कोणा करता जो विश्वास करता जो विश्वास करतो प्रेज लॉर्ड आमेन आपके पास से कितनी बार ये वचन गए आप आणि कितीतरी वेळा हे वचन तुमच्या जवळून गेलं लेकिन अभी तक आपको जीवन आशा है आणि आतापर्यंत जिवंत आशा आहे आपको ये वचन में विश्वास है आणि या वचनामध्ये तुम्हाला विश्वास आहे आपको ये जीवन आशा मिला है क्या आणि तुम्हाला ही जिवंत आशा मिळाली का नहीं मिला इसका कारण क्या है कि आपने वचन पर विश्वास नहीं किया आशा नहीं किया आणि नाही मिळालं कारण का की वचनावर तुम्ही आशा नाही केली है ना 119 का 147 में प्रभु का दास कहता है 119 त्याच्या 147 वचनामध्ये प्रभूचा दास असं म्हणतो 119 त्याच्या 147 मैंने पौध फूटने से पहले दुहाई दी हाँ। मेरी आशा तेरे वचनों पर थी क्यों इतना सवेरे उठ करके क्यों दिखाई दिया क्योंकि मेरी आशा तेरी वचन में है आणि माझी आशा तुझ्या वचनामध्ये आहे हालेलुया यो प्रभु का वचन प्राप्त करने के लिए प्रभु के लोग बहुत इंतजार में रहता है उनको सुबह उठ करके और कुछ भी सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता प्रभु को वाणी सुनने के लिए वो आशा में रहता आणि प्रभूचे लोक एकदम भला पहाटे उठून प्रभूचं वचन ऐकायला ते राहता कारण का त्यांची आशा प्रभूवर आहे आज भी कितने लोग बहुत आशा के साथ ये वचन सुन रहे हैं आणि आजही किती लोक किती आशेने प्रभूचं वचन ऐकत आहे और एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करेगा अजून एक वचन वाचून या ठिकाणी थांबेल 130 का 5 वचन स्तोत्र 130 त्याचं 5 वचन संदेश खत्म हुआ इसलिए नहीं बंद कर रहा हूँ संदेश संपला म्हणून नाही बंद करत समय खत्म हो गया इसलिए बंद कर रहा हूँ वेळ संपला म्हणून बंद करतो हाँ मैं यहोवा की बात जोता हूँ हाँ। मैं जी से उसकी बात जोता हूँ हाँ। और मेरी आशा उसके वचन पर है वाह 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 आमीन। प्रियो प्रभु की वचन पर आशा रखने वाला भक्तों के लिए प्रभु धन्यवाद आणि प्रभूच्या वचनावर आशा ठेवणाऱ्या भक्तांकरता प्रभूला धन्यवाद प्रियो जो भी वचन प्रभु आपको देता है आणि जे काही वचन प्रभू आपल्याला देतो प्रभु वो पूरा करेगा प्रभू ते पूर्ण प्रभु करतो वो पूरा करेगा आणि प्रभू ते पूर्ण करतो है ना जब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ आपका ये दुनिया की यात्रा में कभी भी दुख संकट जब आता है आणि आपल्या या जीवन प्रवासामध्ये कधी दुःख संकट येतं तर तुरंत हमारे अंदर ये वचन सहारा लेकर आता है आणि मग लगेच आपल्यामध्ये ते वचन आपल्याला आश्रय घेऊन येतो आपको मालूम है जब नीति वचन 18 का 10 पे क्या लिखा नीती सूत्र 18 अध्याय 10 वचनामध्ये काय लिहिलंय हाँ, यहोवा का नाम दृढ़ है हाँ। वह भी उसे महाकर सब दुष्टताओं से बचता है समझ में आया Yes, आमीन। कितने लोगों को समझ में आया हालेलुया। योग संकट में पड़ने के समय में क्या करना आणि संकटामध्ये पडल्यानंतर काय करायचं प्रभु को पुकारना प्रभूला विचारायचं प्रभु तू मेरा गढ़ है आणि तू माझा गड आहे तेरे नाम में भरोसा करता हूँ तुझ्या नावात मी विश्वास ठेवतो तू मुझे ये बातों से पार करवाएगा आणि या गोष्टीतून तू मला पार करून दे. सच बात है खरं आहे प्रभु जरूर पार कराएगा आणि प्रभू निश्चितच आपल्याला पार करून घेऊन इधर जाईल बैठा हुआ कितने लोग ऐसा अनुभव आए प्रभु का सुनी करो हालेलुया ऐसा किसका जीवन में विपत्ति नहीं आया आणि प्रणव अशी विपत्ती किती कोणाच्या जीवनात नाही आली क्या हमारे ताकत में हम पार हुआ आपण आपल्या सामर्थ्याने पार झालो का नहीं नाही प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पार हुआ आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात आपण पार झालो प्रभु यीशु मसीह की ऊपर भरोसा करने के द्वारा प्रभु ने हमें पार कराया है आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर भरोसा ठेवण्याच्या द्वारे प्रभूने आपल्याला सर्व संकटातून पार करून नेलेला आहे Praise the Lord. आमेन बहुत बड़ी बात है आमेन है ना आज हमें प्रभु में भरोसा है आज आपल्याला प्रभूमध्ये भरोसा आहे आज हमें प्रभु में पूर्ण आशा है आज आपल्याला प्रभूमध्ये पूर्ण आशा आहे आज प्रभु के वचन में आशा है आज प्रभूच्या वचनामध्ये आशा आहे Praise the Lord. देखो प्रभु में आशा करने वालों का सविशेषता प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो कल आपको बताएगा आणि जे लोक प्रभूमध्ये आशा ठेवतात त्यांची काही वैशिष्ट्य प्रभूचं आगमन आज झालं नाही तर उद्या सांगेल बहुत अनोखी बातें हैं आणि खूप अद्भुत गोष्ट आहे मैं सोचा था आज पूरा हो जाएगा मी विचार केला होता आज पूर्ण होईल लेकिन हमारा दौड़ में हम लोग देखता है सुस्ती हो गया
आणि कदाचित आम्ही आमच्या धावेमध्ये जरा सुस्त झालो. ऐसा हुआ? असं झालं? ऐसा सुस्ती नहीं हुआ है. असं सुस्त नाही झालं आप लोग अभी आगे बढ़ने नहीं दिया. आणि तुम्ही पुढे नाही जाऊ दिले. हम दोष आपके ऊपर डाल देते हैं. प्रेज लो. नहीं, आपके ऊपर भी दोष नहीं तुमच्यावरही दोष नाही. है. आप लोग भी बहुत उत्साही था. आणि तुम्ही खूप उत्साही होते. लेकिन आज आपने बहुत लोगों ने डाया बर्तन भर गया, आणि तुम्ही आणलेले जे भांड आहे ते भरून गेलं इसलिए समय फिनिश हो गया. आणि म्हणून वेळ संपला. हमारा प्रभु हर एक बातों में समय का पाबंद है. आणि आपला प्रभू प्रत्येक वेळेच्या बद्दल आहे. इसलिए हमें समय को महत्व देना है. आणि म्हणून आपण वेळेला महत्व द्यायचं. तो प्रियो, आज भी प्रभु ने हम हर एक से बात किया आजही प्रियानो प्रभू आपल्या प्रत्येकाशी बोलला. है. जो व्यक्ति ध्यान से वचन सुना, आणि ज्या व्यक्तीने लक्ष देऊन देवाचं वचन ऐकलं, उनका जीवन में प्रभु ने एक नया एक आवेश, नया एक उत्साह डाल दिया है. आणि त्याच्या जीवनामध्ये प्रभूने एक नवीन उत्साह टाकला. मैं आग्रह करता हूँ, मी इच्छा करतो आप अपना जीवन का दौड़ और भी हम उत्साह से दौड़े. आणि आपण आपली जीवनाची धाव अधिक उत्साहाने अभी धावे. इस साल का बहुत थोड़ा समय रह गया. आणि या वर्षाचा खूप कमी वेळ राहिला आहे. तो हमें अपने आप को परखना. आणि आपण स्वतःला पार. मेरा आशा पूर्ण रूप में प्रभु में है कि नहीं, आणि माझी आशा पूर्णरित्या प्रभूमध्ये आहे. वचन में है कि नहीं. वचनामध्ये आहे का प्रभु नाही? आपको आशीष दे. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद देव. ये सारे वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे आणि या सर्व वचनाच्या द्वारे प्रभू आपल्याला विपुल असा और आशीर्वाद. सारी महिमा प्रभु को मिले. आणि सर्व गौरव प्रभूला भेटो. आमीन. आमेन.